insolvency laws, and many more. In addition, he has written over 40 books and thousands of articles on various facets of these laws and standards. I would like to like that see Holder sir to tell about the topic and give us a brief what is a voluntary liquidation process all about. And Namaskar, good afternoon. And I'm able to see many young faces, very motivated personalities. Good to see all of you. And thank you, Bhupendra Mantriji, for inviting me and giving this opportunity. I believe I'm audible to each one of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So before you people start your deliberation, let me give you all the good luck for your presentation and the preparation you have made. I have few questions which I will be liking to ask you. अभी आपका जो टॉपिक है वॉलंटरी वाइंडिंग अप या वॉलंटरी लिक्विडेशन का है. सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा, बट जो लोग तैयार करके आए हैं एज अ स्पीकर और बाकी जो लोग सुन रहे हैं उनसे मेरे कुछ प्रश्न हैं. So if I ask you first question, the first question is whether the provisions of Companies Act 2013 are applicable to voluntary liquidation under IBC 2016. तो जो कंपनी लोग के प्रोविजंस हैं, क्या कंपनी लोग के प्रोविजंस वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पर लागू होते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप एक कंपनी को अगर लिक्विडेट करते हो तो यह वह कंपनी है जो कि रजिस्टर आईबीसी में नहीं हुई थी, रजिस्टर कंपनी एक्ट में हुई थी. So the parent law which gave a birth is Companies Act, but the law which is saying the dead company is dead. So that company that law is not the Companies Act but the IBC. So we need to understand whether there is a interplay of provisions between Companies Act and IBC vis-a-vis the voluntary liquidation. Second question, which is also very important, is once the voluntary liquidation under IBC is initiated, so once it commences, whether it will be deemed as a notice of discharge to the officers, employees, and workmen of the corporate debtor. That means the company. Let us take a situation. मान लीजिए कंपनी है RST प्राइवेट लिमिटेड और RST प्राइवेट लिमिटेड के लिए वॉलंटरी लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देते हैं एज लिक्विडेटर. ये तो आपको जानकारी है कि लिक्विडेटर जो होगा उसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होना जरूरी है. तो आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड का जब वॉलंटरी लिक्विडेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, और लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है, तो लिक्विडेटर के अपॉइंट होने से क्या जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्कमैन हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देन इज अदर क्वेश्चन, अगर 2-3 क्वेश्चन मेरे और हैं आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चंस ये हैं. If you have read Insolvency Bankruptcy Code, we have chapter number 3, part 2 of IBC, जिसके अंदर हम बात करते हैं अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस की. जब हम अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो उसमें आता है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें आता है अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन, उसमें आता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन हो गया, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, क्या ये जो अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस हैं, whether these avoidance transactions also need to be identified and determined by the liquidator, and then whether he needs to approach to the NCLT for avoidance thereof. और उसके बाद जो मेन इसके अंदर अहम चीज आती है वो ये आती है कि जो ये अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शंस डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स या एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम इंसॉल्वेंसी लॉ को देखें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, तो वहां लिखा गया है कि the transactions will be having a look back period, meaning thereby if the transaction is a preferential transaction, तो मान लीजिए जो आपका इंसॉल्वेंसी का डेट है वो 1 जनवरी 2023 है, तो मुझे कितना पीछे जाकर ट्रांजेक्शंस को चेक करना है, दैट इज कॉल्ड एज लुक बैक पीरियड. तो लिखा गया कि अगर प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं तो आपको 2 साल लेने होंगे पिछले, अगर पार्टी रिलेटेड है तो, और पार्टी अगर अनरिलेटेड है तो 1 साल लेना होगा. अब ये दिखने में सुनने में सिंपल है, बट सिंपल है नहीं. व्हाई? सेक्शन 43
of IBC deals with preferential transactions. What it says, the relevant time, which we call as a look back period, the relevant time will be 2 years from the date of insolvency commencement. तो पिछले 2 साल जो हमें देखने हैं वो देखने हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के। लेकिन अब समस्या क्या आती है कि पहली समस्या तो यही है कि क्या अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के एप्लीकेशन को भी वॉलंटरी लिक्विडेशन में डील किया जाएगा या नहीं। अगर हम कहते हैं कि डील किया जाएगा तो वॉलंटरी लिक्विडेशन में कोई इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट तो है ही नहीं, बिकॉज इट इज लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, और आई शुड से वॉलंटरी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तो फिर लुक बैक पीरियड क्या होगा, व्हाट विल बी द लुक बैक पीरियड and how it will be determined in case of voluntary liquidation? I believe my question is clear. फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपने अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस को कैप्चर किया, डिटरमाइन किया, और उसके लिए आपने एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा दिया, लेकिन एनसीएलटी का फैसला आया ही नहीं अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के ऊपर। बाकी कंपनी के जो असेट्स हैं वो बिक चुके हैं, लायबिलिटीज जो बाकी हैं वो सेटल हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन उठता है, is it possible to dissolve the company or liquidate the company while avoidance applications are pending for adjudication? एनसीएलटी का फैसला अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन में आना बाकी है, क्या उसकी पेंडेंसी होने के बावजूद कंपनी को डिसॉल्व किया जा सकता है? अब ये मेरे मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन चलिए और दिमाग में आ जाता है मुझे, क्वेश्चन ये आ जाता है, एनसीएलटी का फैसला आ जाता है अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस का, तो उससे पैसा रिकवर भी हो जाता है। So whatever transactions happened in past which were somehow colorable transactions, which is called as avoidance transaction, एनसीएलटी का फैसला आ जाता है, प्रॉपर्टी आपकी रिकवर हो जाती है। अब जो पैसा रिकवर होगा बिकॉज ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस कमिंग इन फेवर ऑफ लिक्विडेटर, whatever money will be recovered, ये वाला पैसा जाएगा किसके पास? बस कंपनी तो है नहीं, तो ये कंपनी का पैसा जो बाद में रिकवर हो रहा है डिसॉल्व होने के बाद, अगर हम मान लें कि कंपनी डिसॉल्व हो सकती है while this अवॉइडेंस एप्लीकेशन इज पेंडिंग, तो ये पैसा जाएगा कहाँ? तो इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, अपने विचार रखूं, मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूंगा, एंड नॉट ओनली स्पीकर्स रादर द एंटायर ऑडियंस, क्योंकि स्पीकर का काम ठीक है, बताने का है, समझाने का है, लेकिन बाकी ऑडियंस का भी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए। Madhav, yeah. So to answer the first question that whether Companies Act will apply or not, I think a specific code has been brought in picture, like insolvency and bankruptcy code, that will always supersede the Companies Act. It's a specific provision for the liquidation specified in that code, and a regulation governing that code. Insolvency and Bankruptcy Board of India Regulation Act 2017 has been formulated to govern the that voluntary liquidation. So they will always apply over and above the Companies Act. Which sections will apply of the Companies Act? That has been very well specified in the code itself. That's like financial statements of under section 143 references has been given of that. One section 174 of the Companies Act has been specified. Which sections will as it is apply on that liquidation process? तो आपका शुभ नाम क्या है? मैं नाम आपका सुन नहीं पाया था उस वक्त। So my name is Madhav. Madhav sir. माधव जी, माधव जी, और आपके जो बाकी मित्र बैठे हैं आसपास, आई कैन सी अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू इन चेक शर्ट, स्माइलिंग फेस, तो उनका भी कोई एक व्यू ले लेते हैं आपके दोस्तों का। तो मैं आपको बताऊं, जो आपने मुझे अभी आंसर दिया है ना माधव जी, ये आंसर गलत है, इसकी पर चर्चा करेंगे। और बाकी जो 3 या 4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं उसके बारे में आपको कोई व्यू, खास तौर पे अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस को लेकर, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काफी बड़ा रोल है, बिकॉज जो लिक्विडेटर्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रांजैक्शन ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। तो व्हाट इज योर व्यू अबाउट अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन? प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ, एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसके बारे में ना मैं फटाफट से ब्रीफिंग कर देता हूँ, बस मेरी एक मीटिंग और लाइंड अप है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए, और मुझे एक बार कंफर्म करना कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। आपको देखो स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? आर यू एबल टू सी a new screen?
माधव जी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? Yes, sir. अच्छा, अब जरा मेरे वर्ड्स को सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, if we go to the Companies Act, in Companies Act we have section number 2 clause number 94A. A is the capital A. Section number 2 clause number 94A defines winding up. So let me show you the definition. तो मैं ये मेरे सामने बेयर एक्ट है. बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशंस हैं, इसके अंदर सबसे आखिरी में आ जाना है हमें, और आपके पास ये 94A वाइंडिंग अप की डेफिनेशन आएगी. अब जरा इसको देखते हैं. तो वाइंडिंग अप को डिफाइन कैसे किया है, आपको ये नजर आ रहा होगा डेफिनेशन. व्हाट दे से, वाइंडिंग अप मींस द वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट. दिस मींस द कंपनीज एक्ट. ठीक है जी. और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एज एप्लीकेबल. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बात तो तय है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत लिक्विडेशन होगा. अभी मैंने स्क्रीन हटा दिया. अच्छा, हाँ, because we are not able to see this. हाँ, वो ठीक है स्क्रीन सर. हटा दिया है ताकि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकूं. तो हमें क्या समझना है सबसे पहले कि सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 94 कैपिटल ए के तहत क्या क्या शामिल हो रहा है. वाइंडिंग अप के अंदर क्या क्या शामिल हो रहा है, एक तो वाइंडिंग अप जो कि कंपनीज एक्ट के तहत होगी, एंड नंबर सेकंड इज द लिक्विडेशन व्हिच विल हैपन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. वापस दिखाता हूं मैं सेक्शन आपका. जैसी winding up means winding up under this act or liquidation under the insolvency and bankruptcy code. Now the word is liquidation. So the word liquidation means when you go to insolvency bankruptcy code, when you travel to insolvency bankruptcy code, in insolvency bankruptcy code, liquidation can be either compulsory liquidation or voluntary liquidation. When we say voluntary liquidation, it will go to section number 59. When you say compulsory liquidation, it will go to section number 33 of IBC. But today's our context is voluntary liquidation, so we will confine ourselves to section number 59 only. तो यहाँ से एक बात तो साबित होती है, कंपनी लॉ ने भी कहा कि वाइंडिंग अप का मतलब क्या होगा, या तो मेरे कानून के हिसाब से वाइंडिंग अप हो जाए या इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के तहत वाइंडिंग अप हो जाए. ठीक है जी. अब इसका देखिए कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट क्या है. एक मिनट वापस चलते हैं एक बार. कंपनीज एक्ट के अंदर जो वाइंडिंग अप प्रोविजंस हैं, दी वाइंडिंग अप प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट आर डेल्ट इन चैप्टर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट. चैप्टर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्राइजेस सेक्शन नंबर 271 टू सेक्शन नंबर 365. अभी क्या हुआ, जब इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इनेक्ट किया गया तो जितने भी सेक्शंस वॉलंटरी वाइंडिंग अप के थे वो कंपनी लॉ से हटा दिए गए. अभी मैं आपको दिखाऊंगा, फिलहाल आप सुनिएगा. Chapter 20 of Companies Act, which deals with winding up provisions, is having 4 parts: Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. जो Part 2 हुआ करता था वो voluntary winding up का होता था. अब Part 2 को डिलीट ऑडिबल. भूपेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? माधव आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है. आप बस 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यू आ गया था. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, आप 1 मिनट, पिछले 1 मिनट से म्यूट थे. अच्छा. हाँ. तो अभी मैं कंटिन्यू करूं वापस से? हाँ, एक सेकंड आप रुक जाए सर. हाँ जी.
ऐसा करो, इससे करो, इससे करो। अब बोलो, अब बोलो। परमिशन का मिलती है पीपल पीपल हाँ इसमें परमिशन यहाँ पे एक सेकंड में उस पे क्लिक करेंगे। मीटिंग ऑप्शंस मैनेज ऑडियो डिसेबल माइक डिसेबल लाइव माइक लाइव ये किसी और ने किया था, सर ने नहीं किया था। ये अपन करेंगे कैसे, ये हटाएं कैसे अपन पावर्स थोड़ा अभी तो अभी कोई वापस कर दे। हाँ, तुम लोग अनम्यूट हो गए ना तुम। सर आप अपना एक कर दो। Yes sir, you are audible. Now you can start, sir. In fact, some technical issues. ओके सर, ओके सर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वाइंडिंग अप के लिए कंपनी लोग का इंटरप्ले क्या है। तो हमने पहले भी ये समझा कि जो डेफिनेशन वाइंडिंग अप की कंपनीज एक्ट में दे रखी है उसके अंदर लिक्विडेशन अंडर दी आईबीसी भी शामिल किया गया है। फिर मैं आपको बता रहा था कि वाइंडिंग अप के लिए कंपनीज एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 20 है और चैप्टर नंबर 20 के अंदर टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो वो वाले पार्ट्स एक बार फिर से देखिएगा आप। आई बिलीव स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yes, sir. तो आप देखिए चैप्टर नंबर 20 वाइंडिंग अप, इसमें 4 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 डीलिंग विद वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल। पार्ट नंबर 2 वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता था, बट जब से इंसॉल्वेंसी पेनल्टी कोड आया तो क्या हुआ, सेक्शन नंबर 2 क्लोज 94A को अमेंड किया गया, उसमें लिक्विडेशन को शामिल कर लिया अंडर आईबीसी, प्लस इस पार्ट को ओमिट कर दिया गया। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के जितने भी सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 304 टिल सेक्शन नंबर 323, all these sections are omitted from the Companies Act and are made a part of section 59 read with voluntary liquidation regulations for the purpose of IBC। ये स्टोरी का पार्ट नंबर 1 है। अब मैंने सवाल पूछा था कि क्या कंपनी लोग के प्रोविजंस वॉलंटरी लिक्विडेशन पर लागू होंगे। आंसर इज यस। रीजन बीइंग जस्ट सी पार्ट नंबर 3, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू एवरी मोड ऑफ वाइंडिंग अप। नाउ मोड का मतलब क्या हुआ, कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वॉलंटरी वाइंडिंग अप। तो जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप आपका आईबीसी में होगा, कॉन्सिक्वेंट अपॉन टू ओमिशन ऑफ दिस पार्ट नंबर 2, these sections, सेक्शन नंबर 324 टिल सेक्शन नंबर 358, तो 324 नंबर सेक्शन से लेकर 358 नंबर सेक्शंस तक जितने भी सेक्शंस हैं वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर आईबीसी पर भी लागू होंगे। बट अंडर आईबीसी देयर आर सर्टेन प्रोविजंस which are exactly the same as they are under part 3 over here. So in that very sense, the provisions of IBC will prevail. So what you need to understand, जैसे यहाँ पर लिखा है preferential payments, fraudulent preference, overriding preferential payments, तो क्योंकि इन sections के लिए voluntary winding up में अपना separate section base है under insolvency bankruptcy code, तो वहां पर ये वाले sections applicable नहीं होंगे। So those sections of Companies Act which are similar to the procedural requirements of IBC section 59, for that very scenario, Companies Act will not be applicable. But for other things, the provisions of Companies Act will be applicable. Are you getting my point? No. So to conclude, we can say that if there are any specific provisions under the IBC with reference to any of the subject matter, then Yes. those provisions will be applicable and company law will not be applicable. Right. अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए exclusion of certain time in computing period of limitation, this is not given by section 59. In that very case, I will go to section number 358. Then you have inspection of books and papers by creditors and contributories. This section is not specifically given by IBC. You will go to section 346 over here. Then books and papers of company to be evidence. This section 345 is not a part of your voluntary liquidation procedure. So you will travel to Companies Act. So ultimately, whatever you said is correct.
And that's why I said interplay of company law with IBC is there and is bound to be there. And the heading itself tells the story. Provisions applicable to every mode of winding up. And how is winding up defined? Winding up is defined in clause number 94A of section 2 to mean even the liquidation under IBC. तो आई बिलीव पहली बात आपको क्लियर हो जाती है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर कंपनी लोग के प्रोविजंस का भी इंटरप्ले रहेगा ही। यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछिए। Yes, sir. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, वो ये पूछा था whether initiation of voluntary liquidation under IBC is deemed to be notice of discharge to the officers, employees and workmen of the corporator। तो voluntary liquidation शुरू हो जाता है और आपका लिक्विडेटर पॉइंट हो जाता है, तो जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं क्या वो डिस्चार्ज हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारियों से? इसमें आपका जो व्यू है वो क्या कहता है? No, sir, they will not be discharged. दे विल नॉट बी डिस्चार्ज, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? Well, for example, if any investigation proceedings are going on or any litigation is filed by or against the company, then the director or the employees will be responsible and they cannot discharge their liability. बट यहाँ पर बात लिटिगेशन की है ना, यहाँ लिटिगेशन नहीं है। Voluntary liquidation is not a litigation per se, but we need to understand voluntary liquidation is a procedural aspect whereby the company is going to be liquidated or wounded up, and more importantly, चलिए अगर आपकी बात मान भी लें, litigation में है ये, मान लेते हैं just for the sake of theoretical debate, तो एक तरफ तो हम बोलते हैं कि जब लिक्विडेटर आ जाएगा तो कंपनी की सारी कमांड उसके पास है, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि लिक्विडेटर आ जाएगा तो एम्प्लॉइज डिस्चार्ज नहीं होंगे। So how these two things go hand in hand? That's why I asked you a question. क्या कहीं लिखा है ऐसा? So let us open up section number 59. बड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी नहीं? Yes, sir. ये आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का बेयर है और ये आपका सेक्शन नंबर 59 है, वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस। नाउ जस्ट इफ आई मूव अहेड, सेक्शन नंबर 59 का सब सेक्शन नंबर 6 देखिए आप, बड़ा गौर फरमाइएगा इस चीज के ऊपर। सेक्शन 59 सब सेक्शन 6 क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 to 53, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 to 53 of chapter 3rd and chapter 7 shall apply to voluntary liquidation proceedings for corporate persons with such modifications as may be necessary। तो क्या लिखा गया? सेक्शन 59 सब सेक्शन 6 कहता है कि जो सेक्शन नंबर 35 में और सेक्शन नंबर 35 से लेकर सेक्शन नंबर 53 तक जो भी प्रोविजंस हैं वो मुटाटिस मुटेंडिस वॉलंटरी लिक्विडेशन पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। चैप्टर 7 की बात मैं करूंगा नहीं अभी, चैप्टर 7 के अंदर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात होती है जो आज हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। अब आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, सेक्शन नंबर 35 से 53 तक जो बात होती है ना, वो बात होती है रिगार्डिंग अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस पर से। अब आपको मैं ये सेक्शंस भी दिखाता हूँ। ये मैंने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को ओपन किया और देखिए यहाँ पर आ गया आपका चैप्टर नंबर 3 लिक्विडेशन प्रोसेस, जरा गौर फरमाइएगा। तो सेक्शन नंबर 59 जो वॉलंटरी लिक्विडेशन की बात करता है, उसने क्या कहा कि लिक्विडेशन प्रोसेस के चैप्टर में जो सेक्शन नंबर 35 से लेकर सेक्शन नंबर 53 तक जो प्रोविजंस हैं वो मुटाटिस मुटाटिस यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसके अंदर जरूरी क्या हो जाता है कि हम सेक्शन नंबर 33 देखें एक बार। अब एक बात तो तय है, हमने ये पढ़ा तो क्या सामने आया कि सेक्शन 33 is not made applicable to the process of voluntary liquidation. Now what section 33 says, section 33 क्या कहता है एक बार देखिएगा। सेक्शन नंबर 33 कहता है कि where the adjudicating authority before expiry of insolvency resolution process period or maximum period permitted for completion of corporate insolvency resolution process etc does not receive a resolution plan or rejects the resolution plan under section 31 for non-compliance of the requirements specified therein, it shall, ये जरा गौर फरमाइएगा, it shall pass an order requiring the corporate debtor to be liquidated। समझने की कोशिश करना क्या मतलब निकल रहा है इसका। अगर कंपनी CIRP में थी और रेजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है तो उस केस के अंदर NCLT की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि वर्ड शैल लिखा है यहाँ पर,
एनसीएलटी की जिम्मेदारी है कि एनसीएलटी एक ऑर्डर पास करे जिससे कंपनी को लिक्विडेशन में लिया जा सके. So when the words are pass an order requiring the corporate debtor to be liquidated, it is not a liquidation order. It is not a liquidation order. Rather, it is an order that liquidation shall commence. So it is a liquidation commencement order. Now, when this liquidation commencement order is passed, then besides all other consequences, one of the consequences relevant as of now for us that is contained in subsection number 7. Subsection 7 of section 33 says the order for liquidation under this section. That means the liquidation commencement date for compulsory liquidation. इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं on the liquidation commencement date. On the liquidation commencement date for compulsory liquidation, what will happen? It shall be deemed as a notice of discharge to the officers, employees and workmen of the corporate debtor. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जब आप, मैं स्क्रीन हटा रहा हूं अभी, जब आप कंपल्सरी लिक्विडेशन को कमेंस करते हैं तो सबसेक्शन नंबर 7 सेक्शन 33 कहता है कि जो कंपनी के अफसर लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, दे विल बी डीम्ड एट देयर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर ओन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस. बट ये वाला प्रोविजन वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए अडॉप्ट नहीं किया गया. ये वाला प्रोविजन वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए अडॉप्ट नहीं किया गया. इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के अपॉइंट होने के बाद डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट सस्पेंड हो जाती है, जिस तरह से लिक्विडेशन कंपल्सरी शुरू हो जाने के बाद ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज और वर्कमैन डिस्चार्ज हो जाते हैं अपनी ड्यूटी से, वैसा कोई सस्पेंशन या डिस्चार्ज वॉलंटरी लिक्विडेटर के अपॉइंट होने पर सेक्शन नंबर 59 के तहत नहीं होगा. That means the officers, employees and workmen will remain responsible, duty bound as such, I emphasize the words as such, when the voluntary liquidation process of a company is going on. Liquidator जो होगा वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, कंपनी के जो एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे. Am I clear? This point is clear to each one of you. Yes. So basically, logic is very, very clear that voluntarily is something where you are suo moto declaring yourself Yes. as a liquidated. So wherever suppose you are saying कि साहब मैं तो अब संन्यास ले रहा हूँ, तो संन्यास लेने हाँ. से पहले आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो तो आप कंप्लीट करके जाओ. हाँ जी. So that is the logic कि साहब That is the यहाँ logic. पे यहाँ पे जो भी बोर्ड है, जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी उसके साथ लोग हैं कंपनी के साथ एसोसिएटेड, वो अगर लिक्विडेट हो रहे हैं तो लिक्विडेट होने से पहले अपना काम करके जाए. अपना काम करके जाए. Yeah. तो सिंपल सी बात ये आ जाती है कि जो कंपनी के अफसर लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पीठ नहीं दिखा सकते, उन्हें पूरा सहयोग देना पड़ेगा. लिक्विडेटर स्वेच्छा से गए हैं, अब स्वेच्छा से गए हैं तो जो वॉलंटरी लिक्विडेटर है वो भी उनका ही आदमी आया उनकी इच्छा से. Obviously he is duty bound to NCLT, but still the only logic is that both of you, that is liquidator and the management per se, they have to work in collaborated manner. Correct. मुझे लगता है ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी क्लियर हो गया आप सब लोगों को जो अभी हाईलाइट कर रखे हैं. ठीक है जी. अब आते तीसरे क्वेश्चन पे. इज इट इनकम्बेंट, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, थोड़ा साफ साफ नजर आएगा. देखिए नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, हमने पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है. तीसरा क्वेश्चन है, is it incumbent upon the voluntary liquidator to identify and determine the avoidance transactions and make application to the adjudicating authority? If yes, what will be the starting point of look back period? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा समझते हैं. मैं स्क्रीन वापस चेंज करता हूँ. एक बार चलते हैं सेक्शन नंबर 59 में. Just a moment. If I go to section number 59 again, एक मिनट दीजिएगा मुझे. ये हम आ जाते हैं दोबारा से बेयर एक्ट में आ गए हैं. बेयर में आने के बाद वी विल क्लिक ऑन 59. सेक्शन नंबर 59 का सबसेक्शन 6 पढ़िए आप. एक मिनट अभी डिस्प्ले होगा. ये सेक्शन 59 आ गया और ये सबसेक्शन नंबर 6 दोबारा पढ़िए. क्या कहता है सेक्शन? द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 to 53 of chapter 3 shall apply to voluntary liquidation proceedings with such modifications as may be necessary. अभी हमने देखा सेक्शन 35 से 53, वापस देखते हैं एक बार.
अब सेक्शन 35 से 53 के अंदर हमारे पास जो बात होती है वो बात होती है अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन की। अब ये कौन कौन सी अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन है ये समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 43 अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 45 अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 47 अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 49 अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 50 एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। दिस इज नथिंग बट फिफ्थ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर अवॉइडेंस एप्लीकेशन। अभी 59 सबसेक्शन 6 को जब आप पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 59 सबसेक्शन 6 कहता है कि सेक्शन नंबर 43, सेक्शन नंबर 45, सेक्शन नंबर 48, सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 49, सेक्शन नंबर 50, ये जो सेक्शंस हैं अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के, इनको भी आप वॉलंटरी लिक्विडेशन में अप्लाई करेंगे विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस एज नेसेसरी, मॉडिफाई करके। अब समस्या क्या आती है जब मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बात तो तय है कि अगर मान लीजिए माधव को किसी कंपनी का वॉलंटरी लिक्विडेटर नियुक्त किया जाए, तो माधव क्या करेंगे? सेक्शन 43 की एप्लीकेशन, सेक्शन 45 की एप्लीकेशन, सेक्शन 49 की एप्लीकेशन, सेक्शन 50 की एप्लीकेशन, सेक्शन 47 की एप्लीकेशन एज द केस में भी, वो एनसीएलटी को फाइल करेंगे कि भाई कंपनी ने बैंकों से पैसा लिया था और वो पैसा जो है किसी और को पे करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, या क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किया गया, या कंपनी ने उधार पर जो पैसा लिया वो मिल सकता था 10% पर, लेकिन वो उधार पर लिया 30% पर, जिसको हम बोलते हैं एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए वो एनसीएलटी जाएंगे और कहेंगे कि ट्रांजैक्शन गलत हुई है, आप ये ऑर्डर पास करें कि जो ट्रांजैक्शन गलत हुई है वो ट्रांजैक्शन कैंसिल की जाए और जो पैसा कंपनी से बाहर गया है वो कंपनी वापस आए। ये एप्लीकेशन तो आप फाइल कर देंगे, क्योंकि आपका सेक्शन नंबर 59 सबसेक्शन 6 कहता है कि the provisions of section number 35 to 53 will be applicable even to voluntary liquidation। एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है सामने। जैसे उदाहरण के लिए मैं क्लिक करता हूँ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप क्या लिखा है। ये कहते हैं एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए सेक्शन 50 में, वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज अ पार्टी टू एन एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द रिसीट ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट ड्यूरिंग द पीरियड। यहां से समझिएगा, ड्यूरिंग द पीरियड विद इन 2 years preceding the insolvency commencement date, preceding the insolvency commencement date। तो क्या कह रहे हैं ये कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के पिछले 2 सालों में अगर कॉर्पोरेट डेटर ने कोई एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में खुद को शामिल किया है, तो क्या करेगा? लिक्विडेटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज द केस में भी। तो अभी तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात हम कर रहे हैं लिक्विडेटर की, लिक्विडेटर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज द केस में भी, बट ही हैज टू डू, he may make an application for avoidance of such transactions to the adjudicating authority, that is NCLT, if terms of such transactions require exorbitant payments to be made by the corporate debtor। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, 10% ब्याज पर लोन मिल सकता था, लेकिन कंपनी ने 30% ब्याज पर लोन लिया, तो ये exorbitant पेमेंट्स होंगी ब्याज की, एंड इट इज एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब समस्या क्या आती है, वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर एक तरफ तो कानून ने कहा सेक्शन नंबर 59 सेक्शन 6 के अंदर कि ये वाले प्रोविजंस वहां पर भी लगेंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन करते वक्त, बट एक समस्या सामने आन खड़ी होती है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन में मेरे पास इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट नहीं है। तो जो पिछले 2 साल मुझे काउंट करने हैं, पिछले 2 साल मुझे काउंट करने हैं, वो काउंट करने हैं मुझे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन की, तो वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर तो मेरे पास इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो इंसॉल्वेंसी। मेरे पास तो यहाँ पर लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है। तो सवाल उठता है, तो अब ये 2 साल कौन सी डेट से काउंट करूं? एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन वाज देयर। इफ यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो वापस, इफ यस, यस पे तो हमने अपना कंसेंट ले लिया कि भाई जो वॉलंटरी लिक्विडेटर है उसको ये वाला एप्लीकेशन लगाना ही लगाना है। लेकिन वो एप्लीकेशन लगाएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेगा लुक बैक पीरियड का, बिकॉज इस वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट ही नहीं है। अब आप देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें लगाने पड़ेंगे यहाँ पर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर पहला जो रूल होता है वो होता है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल का मतलब क्या होता है कि जो लॉ लिखा है वैसा ही पढ़ो, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ।
अब यहाँ पर अगर हम लॉ को जैसा पढ़ रहे हैं और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। फिर आता है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉजिकल या रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब लॉजिकल कंस्ट्रक्शन रूल क्या कहेगा कि लॉ को आप दिमाग से पढ़ो, दिमाग से लॉ को पढ़ो और दिमाग लगाकर आगे कार्यवाही करो। तो अगर मैं दिमाग लगाता हूं तो वापस चलते हैं दिमाग लगाने के लिए एक बार सेक्शन नंबर 59 में। 59 नंबर सेक्शन मेरे को क्या अथॉरिटी देता है, देखिएगा 59 सबसेक्शन 6 कहता है कि ये वाले प्रोविजंस आप अप्लाई तो करेंगे बट विद सच मॉडिफिकेशंस एज मे बी नेसेसरी। तो जो शब्द लिखे है ना विद सच मॉडिफिकेशंस एज मे बी नेसेसरी, इसका मतलब क्या होता है कि फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ voluntary liquidation, if you need to make some changes to the original provisions as contained in sections 35 to 53, you can bring in those changes contextually. अब contextual change क्या है यहाँ पर, insolvency तो है नहीं, voluntary liquidation है, तो it will be very safe interpretation and a logical interpretation also that the words insolvency commencement date should be removed, and in those words we should substitute the words liquidation commencement. तो जहां जहां पर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट लिखा हुआ है अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में हम वहां पर क्या वर्ड्स डाल देंगे, अब नथिंग बट लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तो ये वाला अभी जो क्वेश्चन है मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सबको। Yes. आंसर इज यस। ओके, अब आइए नंबर 4 क्वेश्चन पे। इज इट पॉसिबल टू डिसॉल्व द कंपनी व्हाइल अवॉइडेंस एप्लीकेशंस आर पेंडिंग फॉर एजुडिकेशन। अभी क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने डिस्कशन किया तो आपको एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शंस मिली, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस मिली, आपने उसका पिटीशन बनाया और एनसीएलटी को फाइल कर दिया। मीनवाइल आपने क्या किया, कंपनी की जो लायबिलिटीज है सारी सेटल कर दी, कोई देनदारी बची नहीं, और आपको लगता है कि कंपनी अब डिसॉल्व की जा सकती है बिकॉज कुछ बचा नहीं है करने के लिए सिवाय एक चीज के कि जो मैटर आपने एनसीएलटी में फाइल किया था अवॉइडेंस ट्रांजैक्शन का वो भी पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला एनसीएलटी का नहीं आया। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि until the avoidance applications are disposed of by the NCLT, can the company be dissolved? ये रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। आप लोगों का व्यू क्या है? Avoidance applications are pending for adjudications. वैसे Avoidance तो application मतलब logically we feel that it should not be dissolved. logically it should not be dissolved. बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आती है, और ये आती है बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि जनरली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, भूपेंद्र जी तो मुझसे सीनियर हैं, ये शायद मेरी बात को एंडोर्स करें इस चीज में, हम लोगों की जो जानकारी है So far वो as this जानकारी, हाँ जी, so far this particular subject is concerned, you are senior than me. ओके सर। तो क्या होता है, हम लोग है ना ज्यादातर जब काम करते हैं ना तो किताबों में ध्यान नहीं लगाते, हम लोग विश्वास करते हैं गूगल यूनिवर्सिटी को या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, जिसकी वजह से क्या होता है जानकारी के अभाव में गलत फैसले लिए जाते हैं, गलत कंक्लूजन्स ली जाती हैं। अब उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं, लॉजिकली मेरा दिमाग कह सकता है कि यार ऐसा कैसे होगा, हाउ द कंपनी कैन बी डिसॉल्व्ड व्हेन वन ऑफ द मैटर इज पेंडिंग, बट स्टिल इट कैन बी डिसॉल्व्ड। The government of India, when they passed this law, they never wanted that a company which is already getting liquidated should be babysit just because avoidance application is pending. Liquidator जो है कब तक बेबी सिटिंग करता रहेगा उस कंपनी की जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ सेटल हो चुका है, केवल अवॉइडेंस एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब इस चीज के लिए लेट अस अगेन गो टू द लॉ, एक बार लॉ में चलते हैं। वी हैव आईबीसी रेगुलेशंस, आईबीसी रेगुलेशंस को ओपन करते हैं एक बार, और मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ और समझने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। बिफोर वी गो टू वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड लिक्विडेशन प्रोसेस। तो आप जब पढ़ेंगे ना लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस, में क्लिक करता हूँ, इसमें रेगुलेशन नंबर 44 खोलते हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा अभी आपके लिए। रेगुलेशन नंबर 44 के अंदर जाते हैं अपन। देखिए रेगुलेशन 44 लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस क्या कहता है। रेगुलेशन 44 बात करता है कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन की। इसमें खास चीज आप देखिएगा,
मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सब रेगुलेशन नंबर 1 क्या लिखा है? द लिक्विडेटर शैल लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द लिक्विडेशन commencement date, notwithstanding pendency of any application, notwithstanding pendency of any application for avoidance of transaction अंडर पार्ट सेकंड ऑफ द कोड। पार्ट सेकंड का मतलब क्या है? वो जो हमने भी सेक्शंस देखे थे, चैप्टर 3 में डिलीट कर दिया। डिलीट करने से बहुत ज्यादा कोई अंदर आ नहीं रहा है। पार्ट सेकंड को इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि हमें कुछ ट्रांजेक्शन ही वहां पर अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन मिलती हैं। तो अगर हम लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस की बात करें, जो कंपल्सरी लिक्विडेशन प्रोसेस है, वहां तो रेगुलेशन साफ साफ लिखा कि इवन इफ आपकी जो अवॉइडेंस एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही हैं, उसके बावजूद लिक्विडेटर जो है कॉर्पोरेटर को 1 साल के अंदर अंदर लिक्विडेट कर देता है या कर सकता है। Are you getting my point? Now question arises whether a similar provision is there in voluntary liquidation or not. अब एक बार हम देखते हैं voluntary liquidation के जो regulations हैं। ये देखिए आपके पास आएगा ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। जो रेगुलेशन 44 था उसका टाइटल क्या था? कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। ऐसा टाइटल यहाँ पर भी है। अब आप जरा टाइटल को पढ़ के बताना कि जो बात वहां लिखी थी रेगुलेशन 44 कंपल्सरी लिक्विडेशन में, वैसी कोई बात यहाँ लिखी है? आप देखिए रेगुलेशन नंबर 37 में आते हैं। एक बार जल्दबाजी में भी कोई फैसला मत लीजिएगा आप। जैसे यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन है, ऐसा ही कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन आपका कंपल्सरी वाले रेगुलेशन में भी था। अब 37 नंबर रेगुलेशन देखते हैं एक बार क्या लिखा है यहाँ पर। द लिक्विडेटर शैल एंडेवर, एक तो शब्द क्या है? एंडेवर। चलिए इसको मान लेते हैं कि एंडेवर वर्ड जो है वो शेल के साथ लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंपल्सरी हिदायत ही है। द लिक्विडेटर शैल एंडेवर टू कंप्लीट द लिक्विडेशन प्रोसेस। कौन सा लिक्विडेशन प्रोसेस है ये? नथिंग बट voluntary liquidation process of the corporate person and submit the final report under regulation 38 within 270 days and 90 days as the case may be। आप इस वाले पैरा को पढ़ते हो तो कहीं से भी ऐसा लगता है पता जो ये कहता हो कि लिक्विडेशन तब भी किया जा सकता है जब आपका मैटर पेंडिंग हो अबाउट अवॉइडेंस एप्लीकेशंस? आंसर इज नो। यहाँ पर पढ़ के कहीं से भी ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं आ रहा। अब एक रेगुलेशन में आपको और पढ़वाता हूँ, रेगुलेशन नंबर 38 फाइनल रिपोर्ट। बड़ा गौर से समझिएगा इसको और मुझे अपना उत्तर दीजिएगा उसके बाद। रेगुलेशन नंबर 38 सब रेगुलेशन नंबर 1 एंड इसका B3 हमें खास तौर पे देखना है। On completion of liquidation process, the liquidator shall prepare a final report consisting of etc. etc. सीधा यहाँ पर आते हैं। A statement demonstrating that no litigation is pending against the corporate person or sufficient provision has been made to meet the obligations arising from pending litigation। इस वाले सेंटेंस से क्या समझ में आता है? सर कोई इन केस कोई लिटिगेशन एक पेंडिंग भी है तो जो अपने से अपन को एसेट सेल से रियलाइज हुआ है अपन ने उसके अगेंस्ट में प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो अपन उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या है? रेगुलेशन नंबर 38 ये इंप्रेशन दे रहा है कि भाई अगर सब कुछ हो चुका है तो आप जब फाइल करोगे अपनी फाइनल रिपोर्ट तो उसे बता देना कोई लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है सिवाय इसके। सिवाय इसका मतलब फॉर एग्जांपल अवॉइडेंस एप्लीकेशन। अब जब अवॉइडेंस एप्लीकेशन को आप पेंडिंग रखते हो और एनसीएलटी के पास जाते हो और कहते हो कि भाई सब कुछ सेटल हो चुका है, केवल ये वाली एप्लीकेशन जो आपके पास पेंडिंग है, तो उस केस में एनसीएलटी कंपनी को लिक्विडेट कर सकता है। अब कंपनी लिक्विडेट तो हो गई जबकि एप्लीकेशन पेंडिंग है अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस को लेकर। तो मान लीजिए कंपनी लिक्विडेट हो जाती है ऑन अ गिवन डेट, 6 महीने के बाद एनसीएलटी का फैसला आता है अवॉइडेंस ट्रांजेक्शंस के लिए कि ये वाला पैसा जो गलत तरीके से कंपनी से बाहर गया वापस आना चाहिए। अब वापस आ जाएगा, ये आ जाएगा वापस कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट के अंदर। कंपनी तो रही नहीं ना, तो लिक्विडेटर अकाउंट खुलवा देता है कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट, तो ये पैसा आ जाएगा कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट के अंदर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो पैसा कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट में आया, क्या वो पैसा कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट में रहेगा या किसी के पास जाएगा? तो ये पैसा जाएगा आपका क्रेडिटर्स के पास। और कैसे जाएगा? इन दी वाटरफॉल मैकेनिज्म गिवन बाय सेक्शन नंबर 53। तो जो ये क्वेश्चन आपका देखेंगे आप, 5वां क्वेश्चन जो है, what will be the treatment of any recoveries made out of avoidance transactions? On this recovery, the right will be of the creditors and other stakeholders. And who are these creditors and stakeholders? The list is given by the waterfall mechanism as per section number 53.
तो मान लीजिए आपका 100 रुपया रिकवर हुआ तो 100 रुपया बांटा जाएगा, और कैसे बांटा जाएगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 53, वाटरफॉल मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। तो मुझे लगता है ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। वॉलंटरी लिक्विडेशन सेक्शन केवल एक छोटा सा है 59, लेकिन अगर आप शब्दों के बीच में पढ़ें, लाइंस के बीच में पढ़ें, तो देयर आर मैनी implications which can come up to the forefront। तो यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप पूछो, बाकी मेरी तरफ से की नोट एड्रेस में तो यही की नोट्स हैं। बाकी आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी तो बहुत अच्छी मेहनत की होगी आप लोगों ने। नहीं सर, आपने काफी अच्छा और मेटिकुलसली पूरी चीजों को बताया, और खासकर की जो आपने पोजर्स दिए उससे हालांकि हमारे स्पीकर्स ने काफी अच्छी तैयारी करी, बट कहीं ना कहीं इनको लगा कि यार हमें और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। दैट इज व्हाट इनफैक्ट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर कीनोट स्पीकर्स, एंड यू हैव रियली explained the entire gamut of this voluntary liquid process, that where the challenges can come. Things may be simple, but ultimately as a consultant or as a resolution professionals, ultimately how do we face the challenges and come out with the logical conclusion is more important. So Yes, this was really nice from your side, and we would like that you continue be there in the class if time permits to you. और सर मेरी एक है ना, अभी एक वीसी लाइंड अप है आधे घंटे के बाद, तो मैं अभी आपसे माफी चाहूंगा। I can understand that, sir, because to find time from you is also पर मैं रियली इसमें प्राउड फील करता हूँ कि काफी समय के बाद बच्चों को एड्रेस किया, तो अच्छा लगा मुझे। और आपने इस बहाने कम से कम फेस टू फेस तो मिल नहीं पाते, इस बहाने वर्चुअल इंटरेक्शन तो हुई हमारी दोनों की। yes, and मैं सब लोगों को बता देता हूँ, I and Kamal ji met first time in Pune. Before that, we used to meet on social media by looking to each other's post only. और पुणे में जब मैं मिला इनसे तो he told me कि साहब हमने आपके जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर जो क्लास है वो पूरा का पूरा क्लास मैंने देखा, and you could notice that there are a lot of things which he could observe from that particular class. तो मेरा यही कहना है कि आप जो भी इस पे बोल रहे हैं, जो भी आप इसके ऊपर अपनी वेबिनार्स के अंदर बताते हैं, तो वो कई बार जो हमारे कमल जी स्पीकर्स हैं, इज अगेन मेरे ख्याल से thousands plus he must have addressed the webinars as well as all seminars throughout the India. तो अगर वो लोग आपकी वेबिनार्स को देख रहे हैं तो यू शुड आल्सो ट्राई कि आप इसमें किस तरीके से अपना बेस्ट दे सको। तो थैंक यू कमल जी फॉर बीइंग विद अस, एंड we expect your further deliberations in our other webinars. 100% सर। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, और मुझे आपके बच्चों के नाम तो नहीं पता, बट अभी आपका एक और वेबिनार हुआ था डीमैट ऑफ सिक्योरिटीज, Yes. और एक रोल ऑफ स्मॉल कंपनीज के ऊपर आपने उसमें बोला था, तो मैंने वो भी थोड़ा थोड़ा करके सुना, पूरा तो अभी सुन नहीं पाया हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस है। बट जितने बच्चों ने भी उसमें बात बोली है, बहुत अच्छा उसमें मेहनत की हुआ है। तो कीप आउट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। कोई क्वेरी आपके भविष्य में हो तो आपके सर और मैं तो कनेक्टेड हैं लिंक्डइन पर। बच्चे आजकल इंस्टाग्राम लाइक करते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे आपके कुछ सवाल है तो पूछिएगा। और भूपेंद्र जी, आपको मेरा नमस्कार है कि आपने मुझे ये मौका दिया। माधव, इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? चेहरे पे स्माइल नहीं है आपके बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कि वाइंडिंग अप हो गया है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्माइल। तो अगली बार जयपुर आऊंगा तो माधव जी के साथ चाय पीना पसंद करूंगा सर। ठीक है सर, इजाजत है मुझे। Thank you so much. Thank you. Yes, Madhav. Now you are the expert on this. इस पे शेयर नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें share
आया सब लोगों को समझ में जो बोला सर ने है? कितना मेटिकुलसली उन्होंने लॉ को सीधा वहां पे ले जाके और बताया। तो आई एम श्योर कि हो सकता है आप में से 2-5 लोगों को नहीं फिर भी समझ में आया होगा, क्योंकि कई बार जब सब्जेक्ट नया होता है तो टाइम टेक्स टाइम टू ग्रास्प। चीजों को एनालिसिस करके और फिर उसको डेलिब्रेट करें। सो क्या हुआ भाई? स्क्रीन तो आ रही है लेकिन ऐसी आ रही है। हाँ सही। हाँ माइक ऑन। यस कंटिन्यू। So today we will be discussing on the topic voluntary liquidation process. The guideline for the presentation. Myself, Madhav Jhavar. He is Anuj Goyal. And she is Jain. We will be taking our today's class. The provisions that are dealing with the voluntary liquidation is the section 59 and section 35 to 53 of chapter 3 and chapter 7 that is given in the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. These laws are regulated by the IBBI Voluntary Liquidation Process Regulations 2017. IBBI means Insolvency and Bankruptcy Board of India. So for the introduction, the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 established a contemporary, strong, and decisive insolvency resolution framework in the country. Implementation of IBC is focused on rescuing businesses by time-bound resolution process. IBC provides a detailed framework for voluntary liquidation process, which is significant for a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily. So the major objective behind the bringing this code was to accelerate the process of liquidation. The basic intention of this code was to remove the various hindrances that were time consuming, which we will be discussing how they were removed in the coming slides. First of all, let's understand what are the reasons behind the voluntary liquidation, opting for the voluntary liquidation. So as per the IBBI newsletter, July-September 2023 of the around 1,649 corporate persons that initiated voluntary liquidations till September 30, 2003. The reasons for the initiations are available for 1,571 cases, which are presented in the. Most of these corporate persons are small entities. 1,022 of them have paid up capital of less than 1 crore. Only 234 of them have paid up capital exceeding 5 crores. So we can see here that only the major portion of the entities who opt for voluntary liquidation are the one who much small companies like having equity capital less than 1 crore only. The corporate persons for which details are available have an aggregate paid up capital of 12,040 crores. So now, if we see this pie chart, the 69% of the 1,571 cases opted for voluntary liquidation as they were not carrying any business operations. They were basically the dormant companies that were formed and were formed for not for businesses, but for whatever reasons they were not continuing their operations. So as they were not carrying operations, the management decided to voluntarily liquidate them.
then the 16% of them were who were commercially unviable. Now, what he means by commercially unviable is that they were formed with the intention of carrying the business, but the environment around them was not as supportive as they thought. उन लोगों को लगा कि they were not able to conduct their operations as thought by them. So then the third reason is the promoters unable to manage affairs. That's the 2%. 3% of them are which purpose for which the company was formed accomplished and contract terminations. Now, this is a very logical reason that the company was formed with a certain objective that got terminated. Now they want to voluntarily liquidate it. So, and 10% are the miscellaneous. Now the section 59. If we talk about section 59, subsection 1 says that a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation process under chapter 5, part 2 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So what it says that a corporate person means if we go to a corporate person, it's a limited liability partnership formed under LLP Act 2008, or a person or a entity corporate person which is formed under the Companies Act 2013. And if they want to liquidate itself voluntarily, they must have not committed any default for the liability, for the loan, for regarding anything that they have obligation to repay. The subsection 2 says that the voluntary liquidation of a corporate person under subsection 1 shall meet such conditions and procedural requirements as may be specified by the board. Now, from board here it means Insolvency and Bankruptcy Board of India. The regulations formed under by them. Now, let's discuss the voluntary liquidation process. First of all, what we require is a declaration from the majority of the directors of the company, verified by an affidavit. So the company should first take declaration of the majority of the designated partners if a corporate person is a limited liability partnership or an individual constituting the governing body in case of other corporate persons. Now, from individuals, usually they are the directors, the managing authority of the company. They need to the declaration that they are filing should be verified by an affidavit stating that they have made a full inquiry into the affairs of the corporate persons and they have formed an opinion that either the corporate person has no debt or that it will be able to pay debts in full form from the proceeds of the assets to be sold in the liquidation. So what is the intention here? That the company is solvent. It will be able to pay all its obligation by selling of its assets. The corporate person is not being liquidated to defraud any person. The intentions of liquidation is not to defraud anyone. Because once liquidated, we will understand that only 30 days are provided to give your claim regarding any obligation. Beyond that, no claim will be entertained by under the code. So yeah, so there is no intention to defraud any person using this liquidation process. So the corporate person, and the third point, the corporate person has made sufficient provision to meet the obligation arising on account of pending matters mentioned in subclause 3 of the clause. So these are the what are the pending matters? Pending matters are regarding the assessments, litigations, any proceedings that are pending that we will be discussing in future in coming slides. So the declaration under subclause A shall be accompanied with the following documents, namely audited financial statements and record of business operations of the corporate person for the previous 2 years or for the period since its incorporation, whichever is later. So what we require here is audited financial statements and records of business operations for the past 2 years or the period since its incorporation. For example, I get our company gets liquidated in a 1 year only. So that will be taken as a whichever is later. So 1 year records should be provided. By record of business operations, what we mean here is the statement of reports prepared under Section 134 of the Companies Act and the books of accounts, annual returns submitted under Section 34 or 35 of the LLP Act 2008. Second requirement is the report of valuation of the assets of the corporation, if any, prepared by the registered valuer. Now we all know that at the time of liquidations, assets gets valued and then they are sold. So by chance, if the assets are valued by a registered valuer and a report is prepared, so then that report shall also be filed. Disclosure about pending
proceedings or assessment before statutory authorities and pending litigations in respect of the corporate persons. So a complete disclosure needs to be given of all the pending assessments. A declaration under subregulation 1, clause A, or under the 59 subclause A, clause A shall list each debt of the corporate persons as on the date and state that corporate persons will be able to pay all its debts in the full form from the proceeds of the assets to be sold in the liquidation, provided the corporate person has made provision for preservation of its records after its dissolution. So now the second step, special resolution after the declaration of solvency. Within 4 weeks of the declaration, there shall be a resolution passed by a special majority of the partners or contributors, as the case may be, of the corporate person, requiring the corporate person to be liquidated and appointing an insolvency professional to act as the liquidator. Second point, resolution of the partners or contributors, as the case may be, requiring the corporate person to be liquidated as a result of expiry of the period of its duration, if any, fixed by its constitutional documents, or the occurrence of any event in respect of which the constitutional documents provide that the corporate person shall be dissolved, as the case may be, and appointing an insolvency professional to act as a liquidator. Now, I would like to ask a question. What is the difference that you find in the first and second points? A resolution is being passed in both the points. What's the difference? Why 2 points again? Anyone? So any word difference? Specific word has been used in first point and not in the second. Two words are named. First, special majority has been used in first and not in second. The constitutional document has been used in the second and not in first. Perfect. So yeah, first in the first point, we are required to pass a special resolution as a person who is would like to voluntarily liquidate without any reason, without any intention, past intention. In the second point, what is given is a constitution document we have already written that we are forming a company for a fixed duration or for a specific event. Now, when the event or the duration has been completed, it's a very natural thing that the company will get liquidated only. So only a ordinary resolution is sufficient for that thing. By constitution document, what it is referring to is articles of association. We are required to state our objective of the forming the company. So if we have provided in the article of association that we are forming a company for this specific event or a specific duration, then only a ordinary resolution is sufficient for the resolution of voluntary liquidation. Otherwise, a special resolution needs to be passed. Then the third step is approval of creditors if company owes debt. If the company owes debt any debt to any person, creditors representing 2/3 in value of the debt of the company shall approve the resolution passed under subclause C within 7 days of the resolution. So if a company is having creditors, that around 2/3 of the creditors in value, what is saying is representing the value, shall approve the resolution within 7 days of the resolution passed. We have that the resolution has been passed in 25 on 5 March. Then by 12 March we have to get approved we have to get the approval of the creditors of representing 2/3 value. Notification. Now, fourth point. Notification to the registrar of the resolution. The company shall notify the registrar of companies and the board about the resolution under section 59 subsection 3 to liquidate the company within 7 days of such resolution or the subsequent approval by the creditors as the case may be. So notification needs to be filed with the registrar of the companies and the board within 7 days of the resolution passed. Commencement of voluntary liquidation proceedings. The voluntary liquidation proceedings shall be deemed to have been commenced from the date of passing of the resolution, subject to approval of the creditors. Now the sixth step is application to adjudication authority. After the affairs of the company has been completely wound up and its assets have been completely liquidated,
The liquidator shall make an application to the educating authority for the dissolution of such corporate persons. The education authority shall, on such an application filed by the liquidator, pass an order that the corporate debtor shall be dissolved from the date of that order, and the corporate debtor shall be dissolved accordingly. A copy of an order under subsection 8 shall, within 14 days of the date of such order, be forwarded to the authority if such corporate person is registered, filing the petition before Honorable NCLT. Once the affairs of the corporate person have been completely wound up and its assets fully liquidated, the liquidator shall make an application along with filing report to the NCLT for the dissolution of such company. The tribunal shall fix the date of the hearing of the petition. Where tribunal is satisfied, it shall pass an order for dissolution. Entity shall stand dissolved from the date of the NCLT's order. Now, effect of liquidation. The corporate person shall, from the liquidation commencement date, cease to carry on its business except as far as required for the beneficial winding of its business. So, every business that the entity is conducting shall be ceased to carry on, and only those transactions which are benefiting the binding of the company will be allowed to be conducted by the company. Now, liquidation commencement date means the date on which the proceedings of the voluntary liquidation commence as per the section 59 subsection 5 and regulation 3 subsection 3 and regulation 2 subsection 1 clause C of the IBBI voluntary liquidation process regulation 2017. Now, in the effect of liquidation, what's the main word here is liquidation commencement date, and it's a very important point. As from what time we will find that the liquidation commencement date has been started. Liquidation process has been started. So I would like you to carefully read this definition. Subject to approval of the creditors. Under subsection 3, the voluntary liquidation proceedings in respect of the company shall be deemed to have been commenced from the date of passing of the resolution under subclause C of subsection 3. I will be asking a question in the next slide. So yeah, in the given case, the directors of the company, KNA Private Limited, decided to voluntarily liquidate their company, in regard to which they gave their declaration on 15th February 2024. And a special resolution was passed by the members of the company in the EGM held on 5 March 2024, well within the 4 weeks limit. Determine the liquidation commencement date in the following situations. 2/3 of the creditors did not approve the resolution. 2/3 of the creditors approved the resolution on 14 March 2024, and 2/3 of the creditors did approve the resolution on 9 March 2024. Anyone? First answer. Answer. Date of passing of resolution 5 March and liquidation 15 Dubai horizon from the creditor. First case में creditors approved तो वही नहीं है सिर्फ What is the liquidation commencement date in the given case? Process will not get started. Okay, so we are liquidation commencement date. In the following situations, these are separate situations. Second part, second situation.
Correct. As the condition specified under provision to subsection 3 is not contravened, liquidation process cannot be commenced. So what the catch here is that approval should be of the resolution should be get from the within 7 days. That was 12 March 2024. Since we have got the approval on 14 March 2024, we cannot commence the liquidation process. Now for the third part, how many 9? Reason ones, how many are with 9 March? So the liquidation commencement date should be 9 March. 5th March. 5th March. Remaining? No answer. 15th February. Okay, so 5 March is the correct answer. So here what we learn is that it doesn't all we have to require is the approval from the creditors. It doesn't affect the liquidation commencement date. Liquidation commencement date will be the only the date when the resolution is passed by the shareholders. So now the next question. Where the assessee company having been voluntarily wound up did not carry any business during the relevant assessment year, but earn interest income from business deposits and government securities. Will it prohibit a company which is being voluntarily wound up from receiving income from other sources and interest on securities? We have understood that the company will cease to carry on the business operations. I have told you the provisions related to this case study. Now tell me that the interest receiving of the income from other sources, interest income, for example, will it be allowed or prohibited? So let's understand the case study. It's a very interesting one. Where the assessee company, having been voluntarily wound up, did not carry on any business during the relevant assessment year, but earned interest income from bank deposit and government securities. It was held that in case of a voluntary winding up, the company shall cease to carry on its business, except so far as may be required for the beneficial winding of the business. It does not prohibit a company which is being voluntarily wound up from receiving income from other sources and interest on securities. Having found that income was derived by the assessee during the assessment year in the form of interest on deposits and interest on government securities, the tribunal erred in holding that the input receipts were capital receipts. So the contention of after the commencement of the winding up, the assessee company could carry on business only for the realization of capital. Hence, interest and other receipts by the assessee were capital receipts, being not liable to tax, is not valid. What here was done was liquidation was started, interest income was still coming. What the assessee did was it started treating the interest income as a capital receipts. It told that since the no income is it has ceased to carry on the business, no income is allowed. So the interest income that it is receiving is of the capital nature, not of revenue nature. And we all know that capital nature income is not taxed under the income tax. So they try to just find a loophole and like that so they have to not pay any tax on the interest income that they are receiving. But what it was held that the income that they are receiving in the form of interest will still be treated as a revenue receipts only and not the capital receipts and will be liable to tax. This case was the Commissioner of Income Tax versus Liquidator of Ratlam Electric Supply and Weaving Mills Company Limited. Now let's understand some regulations as provided in the IBBI regulations 2017. Regulation 8 of the IBBI voluntary liquidation process provide that a liquidator shall prepare and submit preliminary report, status report, minutes of the consultations with stakeholders, final report in the manner specified in these regulations. We will be discussing these reports in the coming slides.
the preliminary report. Regulation 9 provides that a liquidator shall submit a preliminary report to the corporate person within 45 days from the liquidation commencement date, detailing the capital structure of the corporate person, the estimate of its assets and liabilities as on liquidation commencement date based on the books of the corporate persons, provided that the liquidator has to believe to be received in writing that the books of the corporate person are not reliable. He shall also provide such estimates based on the reliable records and data otherwise available to him. Whether he intends to make any further inquiry in any matter relating to the promotion, formation, or failure of the corporate person or the conduct of the business thereof, and the proposed plan of action for carrying out the liquidation, including the timeline within which he proceeds to carry it out and estimated liquidation costs. So complete summary needs to be given to the corporate person who is appointed the liquidator. That what is the capital structure of the corporate person according to him? What are the estimates of the assets and liabilities that will be liquidated? And if any reasons in writing that he is not relying the data provided by the corporate person, and whether his intention, whether any further inquiry, whether he needs to make any further inquiry in the financial statements data that is provided by the corporate person, or any what will be the estimated liquid cost that he is estimating. Now, if liquidation, if the liquidator is he can engage a professional. A liquidator may engage professional to assist him in the discharge of his duties, obligations, and functions for a reasonable remuneration, and such remuneration shall form part of the liquidation cost. The liquidator shall not engage such a professional. Now, these are the conditions that who can be a professional, which can be engaged. Who is his relative? Is a related party of the corporate person. Has served as an auditor to the corporate person at any time during the 5 years preceding the liquidation commencement date. A professional so engaged or proposed to be engaged shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders or the corporate person as soon as he becomes aware of it to the liquidator. So every relationship needs to be disclosed. Now, public announcement by the liquidator. Regulation 14 provides that a liquidator shall make a public announcement in Form A of the Schedule 1 within 5 days of his appointment. The public announcement shall call upon stakeholders to submit their claims as on the liquidation date, provided the last date for submission of the claim shall be 30 days from the liquidation commencement date. The announcement shall be published in one reasonable language newspaper with wide circulation at the location of the registered officer to principal office. If any of the corporate person and any other location where in the opinion of the liquidator, the corporate person conducts material business operations. On the website, if any of the corporate person, and on the website if designated by the board for this purpose. So public announcement needs to be made by the liquidator, which he is appointed as a liquidator of XYZ company, and that if anyone wants to submit their claims, they will have 30 days limit to submit their claims. Beyond that, no claims will be entertained by them. In this regard, as I said, that the process was made removing all the hindrances, time-consuming foundations that were there before. So it is one example of that. The clarification was given by the income tax department that first of what happened before was that an NOC needs to be taken from the income tax department. That they have not initiated or will initiate any assessment, any tax obligations on the liquidated debtor, on the debtor corporate and they have no objection that the company is being liquidated. So what happened here is that Regulation 19 of the IBBI Regulation 2017 mandates the liquidator to make the public announcement within 5 days of his appointment, calling for submission of claims by stakeholders within 30 days from the liquidation commencement date. The regulation also obligates all the financial creditors, operational creditors, including government and other stakeholders to submit their claims within the specified period. If the claims are not submitted in time, the corporate person may get dissolved without dealing with such claims, and such claims may be constantly get extinguished. It has been noticed that even after providing opportunity for filing of claims, a liquidator seeks no objection certificate or no due certificate from the income tax department, despite the fact that the code or the regulation do not envisage seeking such NOC. There was no such requirement given in the code or regulation, but still the company needs to seek this NOC from the income tax department.
Why was it done? Because it was provided in the Section 178 of the Income Tax Act 1961. In this regard, Section 178 of the Income Tax Act, which indirectly obligates the liquidator to fulfill certain income tax related requirements, explicitly states that the provisions of this section shall be effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law or timely in force except the provisions of the code. The process of obtaining of such NOC from the income tax department consumes substantial time and thus militates against the express provisions of the code and defeats the objective of the time-bound completion of the process under the code. Therefore, IBBI, by its circular number IBBI LIQ 45/2021, dated 15 November 2021, clarified that as per the provisions of the code and the regulations read with Section 178 of the Income Tax Act 1961, an insolvency professional handling voluntary liquidation process is not required to seek any NOC, NDC from the Income Tax Department as part of the compliance in the said process. Clear? So that's all from my side. Now Anuj will present the opinion. तालियों से किसी को नींद आ रही होगी तो उठ गई है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो चारों तरफ ऑडियंस को देखो, है ना। और कोई मान लो सो रहा है, अटेंटिव नहीं है, तो उसका थोड़ा सा जोर से हिलाओ, यार ये सो क्यों रहा है, वो हिलाओगे कैसे, सवाल पूछो। ये थोड़ा सा सीख लो तो क्या होगा कि इट विल बी इंटरेक्टिव। आपको यहाँ समझ में आ जाता है कि कौन प्रॉपर सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। एक हल्का सा 360 डिग्री राउंड लोगे ना तो पता चल जाएगा, समझे। दे आर आवर फर्स्ट टाइम स्पीकर्स, so definitely they have done very good job. Thank you so much, Madhav, for your insightful take on the topic. We hereby further discuss about who can be the liquidator, what are their powers, and how the proof of claim. It means how can a creditor claim their dues from the company. So, appointment of an insolvency professional as a liquidator. The corporate person shall appoint an insolvency professional as a liquidator, and whenever required, may replace him by appointing another insolvency profession as liquidator by resolution passed under clause C subsection 3 of section 59. Here, the word may be replaced plays a significant role because an insolvency professional can also be replaced in case he meets any disqualification to be an insolvency professional. The implication of this provision is to ensure that not only the shareholder of the member of a corporate entity have agreed to the liquidation process, but also that a significant portion of creditors, specifically those representing 2/3 debts of outstanding debt, means the creditors who owes to the company 2/3 amount shall also give their consent about appointing a liquidator and other related matters. This requirement is designed to protect the interest of the creditors by involving them in decision to liquidate the company voluntarily, thereby ensuring their rights are considered and safeguarded during the liquidation process. Why creditors are involved in passing such resolution? Because the creditors have their financial interest in the company, because the amount is due, their amount are due on the company. So creditors are also involved to pass such resolution, provided that such resolution shall contain the terms and conditions of appointment of liquidator, including the remuneration payable to them. When such resolution is passed by the company, all the requirements like what would be the liquidation cost, what are the remuneration paid to the liquidator, shall also be included in such resolution. The insolvency professional shall, within 7 days of his appointment as a liquidator, intimate the board of about such appointment. Whoever is being appointed as the insolvency profession, he have to intimate the board. Here, the board represents the IBBI, Insolvency and Bankruptcy Board of India, within 7 days of his appointment. Now, who is eligible to be a liquidator? An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a liquidator if he and every partner or director of insolvency professional entity of which he is partner or director
is independent of corporate person. Means insolvency professional जो appoint हो रहा है, and every other partner or director of such entity in which he is a director or partner should be independent of corporate persons. It means there should be no influence on such entity. A person shall be considered independent of a corporate person if he is eligible to be appointed as independent director of the company of corporate person and is not related to such corporate person. The section 149 of the company that provide about who can be an independent director briefly it will contain that no precarious relationship should be there, no financial dependence should be there of corporate person. So these are provided in 149 section of independent Companies Act about independent director. Or the third requirement is has not been an employee or partner of a firm of auditor or secretarial auditor or cost auditor of the corporate person. It means the corporate debtor who is being liquidating, their secretarial auditor, cost auditor, or statutory auditors. The insolvency profession shall not be any employee and partner of such firm, or legal or consulting firm that has or had any transaction with the corporate person contributing 10% or more of their gross turnover of such firm at any time in the last year. It means the insolvency profession shall not be related, means shall not be an employer partner of such firm, such legal consultancy firm who gets their 10% of revenue from the corporate person. An insolvency professional shall not be eligible to be appointed as liquidator if he or the insolvency professional entity of which he is a partner or director is under restraint of order of the board. It means IBBI can restrict some entities, some professional entities to be a liquidator. So such a person who is been appointed as a liquidator shall not be related with such entity who's been restricted by the board. A liquidator shall disclose the existence of pecuniary relationship, personal relationship with the concerned corporate person and any of its stakeholder as soon as he becomes aware of it to the board and the registrar. It means usko as soon as even after appointment of such professional, if he gets to know about any relationship he has with the corporate person or any of the managing director or board of the corporate person, he should intimate it to the board. It means the IBBI and the registrar. An insolvency professional shall not be continued as a liquidator if the insolvency professional entity of which he is a director or partner or any other partner or director of such insolvency professional entity represent any stakeholder in the same liquidation. Here is the case. मान लीजिए कोई इंसॉल्वेंसी कोई कॉर्पोरेट पर्सन लिक्विडेशन में जा रहा है और उसी लिक्विडेशन प्रोसेस में क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट उसी एंटिटी से कोई और कर रहा है, तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इट मींस इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर in the same in the same liquidation, so there could be a biasness that these creditors will get any preference on liquidation. So this requirement has been made. Powers of the liquidator: sell the assets of the corporate debtor in manner specified. It's like he can sell the assets of the corporate debtor, verify the claims of the creditors and admit or reject. जो professional है, he can admit the claim, reject the claim, or partially admit the claim. Take custody or control of the assets over which corporate debtor has his ownership right. Custody में वो अपनी ले लेगा प्रोफेशनल जो भी assets कंपनी की है. ये corporate debtor जगह जगह नाम आ रहा है, क्या है corporate debtor? हैं? तो आपने किसी ने पूछा ही हर जगह आ रहा है ना. अपन जिसकी वॉलंटरी लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं और आपको कॉर्पोरेट डेटर ही नहीं पता क्या है तो कैसे चलेगा? क्या भी कॉर्पोरेट डेटर entity which is being liquidating in the process. It minimize the obligations to pay. Under debt.
जिसके obligations है to pay some amount to others. So due है, that is the corporate debt. We are talking about corporate. Institution or defend any legal actions in the name of the corporate debtor. It means any litigation has been filed against the company, it will be defended by the by the liquidator. Carry on the business of corporate debtor for its beneficial liquidation as it deems. Carry on, raise any security interest over the property of the corporate debtor. If over any property, the corporate debtor or the company has any claim, the liquidator should raise it. Consult any stakeholders and entitled for the distribution of proceeds. The liquidator has to deal with all the stakeholders, which are like whoever demands anything from the company will be called as a stakeholder. So liquidator has the duty to communicate with all those stakeholders. Duties and restrictions: not to carry any action that is fraudulent, unfair, or detrimental to the interest of the corporate debtor or its creditor. Ensure that assets of the corporate debtor are sold, maximizing the value to the creditor. It means if liquidator will sold the assets for the maximum value, it will generate the maximum cash flows for the creditor. Obtain the prior approval of the committee of the creditors or the executing authority in certain cases, such as when selling of the assets of the corporate debtor in manner other than by public auction. It means if liquidator is selling the assets of the company other than public auctions, then he should get the permission from the committee of creditors and the executing authority. Claim by various creditors and proof of claim. So a person who claims to be a stakeholder shall prove his claim for the debts or dues to him, including interest. The duty to prove the claim is on the such creditor. Stakeholders means the stakeholders entitled for the proceeds from the sale of liquidation assets. Stakeholders represent so all parties who demands money from the company or the proceeds from the liquidation. Claimed by operational creditors. There are certain types. There are many types of creditors like operational creditors, financial creditors, workmen and employees, and other stakeholders who can claim from the company. So the IBBA regulations provide different forms to be submitted to the liquidator for verification of the claim. The liquidator will verify all the claims of the creditors and he will admit it, reject it, or partially admit. So first of all, we will discuss about claim by operational creditors. A person claiming to be operational creditors of the corporate person other than workman or employee shall submit proof of claim to the liquidator by the post or electronic in Form B of Schedule 1. Form B Schedule 1 में आपको submit करना पड़ेगा to the liquidator of the company. The existence of debt due to an operational creditors under this regulation may be proved on the basis of records available with information utility or other relevant document which adequately establish the debt, including any of the following: a contract of supply of goods or services with the corporate person supported by the invoice demanding payment for the goods and services supplied to the corporate person, an order of court tribunal that has adjudicating upon the non-payment of the debt, if any, and the final account of the corporate person. It means if operational creditor is demanding amount from the company, what could be the information utility data available on information utility or any other invoices raised by the corporate person, any other any order of court and tribunal in case if creditors are due from long time and creditors have made case on the company and court has passed the order that company has to pay the debt to the such creditor, then such order can be submitted as a proof of claim for the demanding the claim of the creditor. Financial account of the corporate person can also be a proof of claim. Claim by financial creditors, same as claim by operational creditors. Financial creditors can claim in Form C of Schedule 1 and the proofs can be submitted by the record available on information utility or other relevant document with which adequately establish the debt, including any of the following: a financial contract. In case of financial creditors, the financial contract will be there, so it could be submitted as a proof of claim
जिससे अपने लोन ले लोन ले रहे रखा है हैं, अपने बैंक हो गया, कोई हो गया, उसके साथ अपन कॉन्टेक्ट करेंगे। जिससे अपन ने कोई माल ले रखा है और उसको पैसा देना है तो वो लोन ले रखा है वो record evidencing that the amount committed by the financial creditor to the corporate person and the facility has been drawn by the corporate person. Financial statement showing that the debt has not been repaid. Financial statement of the corporate person, if it shows that the debt is still outstanding, that it will then it will be considered as a proof of claim. An order of court or tribunal that has adjudicated upon non-payment of debt. Similarly, if any order has been passed by a adjudicating authority or the court that the company has to pay the debt to the financial creditor, then it will be considered as a proof of claim. Next is claim by workman and employee. So a person claiming to be a workman or an employee of the corporate person shall submit a proof of claim in Form D of Schedule 1. Here we can know that employees are actually scattered and have low financial background. Means they could not actually proceed in the liquidation process. They could not actually do the litigation on the company. So in overall, they could hire a authorized representative on the behalf of them. So if a authorized representative is submitting the proof of claim on behalf of employees, then it will be submitted in Form E of Schedule. The liquidator shall admit the claim of a workman or an employee on the basis of books of accounts of the corporate person if such workman, the existence of such dues to workmen or employee may be proved by them individually or collectively on the basis of records available on information utility or other relevant document adequate to establish the due, including any or all of the above. Proof of employment, a contract of employment could be a proof of claim. Evidence of notice demanding payment unpaid amount and any documentary or other proof payment has not been made. Any documentary evidence that the amount payable to the employees has not been paid could be submitted as a proof of claim. An order of court or a tribunal that has adjudicated upon the non-payment of the dues. Similarly, if court has passed any order, it will be regarded as a proof of claim. Claim by other stakeholders, Regulation 19. A person claiming to be a stakeholder other than Regulation 16, 17, or 18 shall submit a proof of claim in Form F of Schedule 1. The existence of the claim stakeholders may be proved by the information utility records or other relevant document which adequately establish the claim, including any or all of the following: documentary evidence of notice demanding payment of unpaid amount or bank statements claimant showing that the claim has not been paid or affidavit that documentary evidence or the bank statements are true and valid and genuine. If the bank statement shows that the claim is pending on the company, then it will be regarded as a proof of claim. Documentary and electronic evidence of shareholding. If shareholders have in electronic form, if shareholders hold the share of the company, so it will be a proof of claim that they demand money from the company. An order of court, tribunal, or any other authority that adjudicated upon the non-payment of the claim, if any. Proving security interest, it's covered in the Regulation 20. It means if any claim by the stakeholder of the company has security, it means a secured creditor, then existence of such security interest may be proved by the creditors. Means वो जो security है वो भी उस creditor को prove करना पड़ेगा कि वो property मेरे उसके लिए secured है, मेरे debts के लिए secured है. The record available on information utility, certificate registration of charge. It means आपने registration of charge सबने पढ़ा होगा कि जब अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को सिक्योर करते हैं अपने डेट्स के अगेंस्ट, तो आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है. So it could be a proof of claim that such debt is payable to the person. Proof of registration of charge with central registry, regulation, asset reconstruction, and security interest of India, or other relevant document which adequately establish the security of interest. Other relevant document means any contracts of the corporate person. So cost of proof. It means any cost incurred by the stakeholders in proving their claim. It should be bear by the stakeholders itself.
cost incurred by the liquidator. Any cost incurred by the liquidator in liquidation process should be part of the cost of liquidation. So cost incurred by the liquidator for verification and determination of claim shall form a part of liquidation cost. However, if claim or part of the claim is found to be false, the liquidator shall endeavor to recover the cost incurred on for the verification and determination of claim from the such claimant and shall provide the details of such claimant to the board. It means if any stakeholder claims anything from the liquidator against the company, and if such claim turns out to be false. So, if liquidator has incurred any cost in confirming such claim, then such cost should be recovered by the recovered from such stakeholders, and details of such stakeholder or claimant should be given to the board. Board means IBBI, obviously. Substantiation of claim. The liquidator may call on other evidence as it deems fit of claimant for substantiating the whole or part of its claim. It means if any claimant submitted the documents of their claim and liquidator is in opinion that such documents are not appropriate or such documents are not enough, then he could ask for the further documents as per regulation 20. Production of bills of exchange of promissory note. Similarly, as invoices are submitted as promissory note or bill of exchange could be submitted as a proof of claim, and we could demand from the stakeholders can demand from the company against that such promissory note or bills of exchange. Determination of quantum of claim, where the amount claimed by the claimant is not precise due to any contingency or any other reason. The liquidator shall make the best estimate of the amount of claim based on the consultation with the claimant and the corporate person and information available with him. It means if any claim which is contingent in nature, it means you cannot decide whether with how much amount is going to be paid, whether it is in litigation or any other case. Then the liquidator with discussion with such claimant and the corporate person shall decide that how much amount is going to be paid to such claimant and shall make the provisions accordingly. That in foreign currency, the claim denominated in the foreign currency shall be valued in the Indian currency at an official exchange rate on the liquidation commencement date. The official exchange rate is the reference rate published by the Reserve Bank of India or delivered from the reference rate. फिर आगे चेक क्या हुआ फोन क्यों देख रहा है फोन बंद कर दिया करो जब क्लास में स्विच ऑफ कर दो that in case corporate person has to pay that, their debts in foreign currency, it means if import debts are there, so the liquidator should determine the claim on the basis of the exchange rate which is on the liquidation commencement date, the official exchange rate which is published by the RBI. Periodical payments. In case of rent, interest, and any other such payments periodical in nature, a person may claim only the amount due unpaid up to the liquidation commencement date, that payable at any future date, at any future time. So a person may prove for the claim whose payment was not yet due on the liquidation commencement date and is entitled to distribution in the same manner as any other stakeholder. Where stakeholder has proved for his claim under sub-regulation 1 and the debt has fallen due before distribution, he is entitled to distribution of the admitted claim due as following. It means we have to do present value of the future claims. If any claimant has the future claims on the company, then such claims should be settled on the present value of such output. Mutual credits are and set-offs. If a company demands from someone and also has to pay that same person, then such mutual debts should be set off. Where there are mutual dealings between the corporate person and another party, the sums due from the one party shall be set off against the sums due from the other to arrive at the net amount payable to the corporate person or the other party. It means अगर अपन किससे पैसा ले अपन ने किसी को सप्लाई भी किया और उससे माल परचेज भी किया, तो वो जो क्लेम है अपन का अपना दोनों में वो सेटअप होगा और इन केस अपन
अपन पेबल है तो अपन उसको पेमेंट करेंगे और अपन रिसीवेबल है तो अपन उससे रिसीव करेंगे. Verification of claim. The liquidator shall verify the claim submitted within 30 days from the last date of receipt of claim and may either admit or reject the claim in whole or in part, as the case may be. The creditor may apply to the adjudicating authority against the decision of the liquidator. जो liquidator है, he should verify claim within 30 days of the receipt of claim. Last date of receipt of claim, he should verify within 30 days. List of stakeholders. The liquidator shall prepare the list of stakeholders on the basis of proof of claim submitted to the liquidator. Regulation provided as under. The liquidator shall prepare list of stakeholders on the basis of proof of claim submitted and accepted under these regulations with the amount used to the such stakeholder, the extent to which debts are due, and secured and unsecured. The details of the stakeholder, the proof of admitted or rejected in part or wholly rejected. The liquidator shall prepare the list of stakeholders within 45 days, means whichever the last date of submission of receipt of claim, the liquidator shall prepare the list of all the stakeholders within 45 days. In case there are no creditors, then he should prepare the list within the 15 days. The list of stakeholders as modified from time to time shall be available for inspection of by the person who submitted the proof of claim, available for inspection of member, partners, directors, guarantors of the corporate person, displayed on the website if any of the corporate person, displayed on the website if any designated by the board for this purpose. Now other topic is realization of assets. The liquidator has to realize the value of assets, recover monies use and realize uncalled capital or unpaid capital contribution. All money will be kept in the bank account in a scheduled bank provided under Regulation 34 or ICBA. Contributory, here the word contributory means a member or of a company, partner of a limited liability partnership, and other person liable to contribute towards the assets of the corporate person in the event of its liquidation. Manner of sale. Regulation 31 provides that the liquidator may value and sell the assets of the corporate person in the manner and mode approved by the corporate person in compliance with the provision, if any, and in the applicable status. Recovery of money. The liquidator has to recover all the monies from the debtors and other assets as soon as possible. The liquidator shall endeavor to realize all the assets and dues of the corporate person in time-bound manner and maximizing the value to the stakeholders. Liquidator to realize uncalled capital and unpaid capital contribution. Liquidator to realize uncalled capital or uncalled unpaid capital contribution. Regulation 32 specifies about such topic. The liquidator shall realize any amount due from any contributory to the corporate person. Liquidator has a right to claim the uncalled capital from the stakeholders, from the members of the company. Notwithstanding any charge or encumbrance or the uncalled capital of the corporate person, the liquidator shall be entitled to call and realize the uncalled capital of the corporate person and to collect the arrears, if any, on calls made prior to the liquidation commencement date, by providing a notice to the contributories to make payments within 15 days from the receipt of notice. It means liquidator will provide notice to the members of the company to contribute to the uncalled capital and paid capital of their to the company. No distribution shall be made to a contributory unless he makes his contribution to the uncalled or unpaid capital as required in the constitutional document of the corporate person. It means any surplus if remains out of the proceeds of assets, it will not be distributed to the stakeholder to the member until he pays his uncalled capital or unpaid dues. All money is to be paid into the bank account and shall not be used for except distribution in accordance with provide the liquidator shall open a bank account in the name of corporate person followed by the word involuntary liquidation in a scheduled bank.
It means the liquidator will open an account in the name of the corporate person in liquidation process, and it should contain the word involuntary liquidation. The liquidator shall pay the credit of the bank account opened in sub-regulation 1 on monies including checks and demand draft received by him as a liquidator of the company, and realization of each day shall be deposited in the bank. It means any realization made out of asset should be deposited in the such bank account within next working day. Distribution of proceeds and returns of money. The liquidator shall distribute the proceeds from the realization within 30 days from the receipts of amount to the stakeholders. The liquidation cost shall be deducted before distribution is made. The liquidator may, with the approval of corporate person, distribute among the stakeholders an asset that cannot be readily advantageous to sold due to pecuniary nature or other special circumstances. It means if corporate person have any asset which could not be sold, and if sold, then it will be sold in minimum value, then liquidator on the basis of his judgment can give the asset to the stakeholders of the company against their claims. Detection of fraud and insolvency. Where the liquidator is of the opinion that the liquidation is being done to defraud a person, he shall make an application to the adjudicatory authority to suspend the process of liquidation and pass such order as it deems fit. It means if any fraud arises, if any fraud comes to notice of the liquidator, he should appeal to the adjudicating authority that the liquidation process should be stopped and suspended. Where the liquidator is in opinion that the corporate person will not be able to pay its debt in the full form, the proceeds of the assets of to be sold in the liquidation, he shall make the application to the adjudicating authority to suspend the process of liquidation and pass such order as it deems fit. It means if the corporate person is unable to pay its debts from the proceeds of the asset sale, then liquidator should appeal that liquidation process should stop and adjudicating authority should pass order as it deems fit. Thank you so much. Thank you, Anderson Nada, for giving us guidance. Now, the next topic is hierarchy for distributing the proceeds. First is insolvency resolution, process cost and liquidation cost. Basically, इसके अंदर बहुत सारी cost आती है which is related to the process of liquidation, चाहे वो application हो गई या फिर और भी जो liquidator है उसकी fees हो गई, वो सब इसके अंदर cover होता है. Second is workmen's dues up to 24 months and debts owed to secured creditors. जो भी workmen है उनकी dues है up to 24 months will be covered here, and जो भी debts है secured creditors की उनका payment होगा. Then next is wages and unpaid dues to employees up to 12 months. जो भी wages है employees की up to 12 months, then it will be paid. Then financial debts owed to unsecured creditors. जो unsecured creditors है उनकी जो भी financial debts है that will be paid. Then dues to the central and state government up to 24 months. जो भी dues है central state government की चाहे वो GST हो गया, income tax हो गया, वो जो भी up to 24 months की है वो pay होगी. Then any remaining debts and dues, then preference shareholders and then equity shareholders. Next is completion of liquidation process. As per Regulation 37 of Insolvency and Bankruptcy Board of India, Voluntary Liquidation Process Regulations 2017, amended up to 31st January 2024, the liquidator shall endeavor to complete the liquidation process of the corporate person and submit the final report under Regulation 38 within 270 days from the liquidation commencement date, where the creditors have approved the resolution, and 90 days from the liquidation commencement date in any other case. जो liquidator है उसको जो liquidator है उसको liquidation process complete करना होता है. इसकी दो timelines है. First is 270 days in case जो creditors ने approve किया resolution, and 90 days in any other cases, मतलब जहाँ पे creditors नहीं है company के. Now, in the event of the liquidation process continuing for more than the period stipulated in sub-regulation 1, the liquidator shall first hold a meeting of the contributories of the corporate person within 15 days from the end of 270 days or 90 days as the case may be, and thereafter
till the submission of application for dissolution of corporate person. तो अगर लिक्विडेशन प्रोसेस अपनी जो टाइमलाइन थी 270 डेज और 90 डेज में कंप्लीट नहीं होता तो जो लिक्विडेटर है उसको मीटिंग रखनी पड़ेगी कॉन्ट्रीब्यूटरीज के साथ. कॉन्ट्रीब्यूटरीज आर बेसिकली द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, वो उसको जैसे अपनी जो टाइमलाइन है दैट इज 270 डेज और 90 डेज वो कंप्लीट होगी उसके 15 डेज के विद इन वो रखनी पड़ेगी. एंड एवरी सक्सीडिंग 270 डेज और 90 डेज के अंदर वो मीटिंग्स होती रहेगी टिल वो सबमिट कर देगा एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन. नाउ उसको प्रेजेंट करनी पड़ेगी एक स्टेटस रिपोर्ट व्हिच इंडिकेटिंग द प्रोग्रेस इन लिक्विडेशन इंक्लूडिंग settlement of list of stakeholders, the details of any assets that remain unsold and unrealized, distribution made to the stakeholders, distribution of unsold assets made to the stakeholders, developments in any material litigation by or against the corporate person, and the reasons for not completing the process within stipulated time period, and the additional time required for completing the process. फिर उसको एक स्टेटस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर उसको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स का सेटलमेंट हो चुका है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, कौन कौन से एसेट्स अभी तक अनसोल्ड है या फिर जो डेटर्स है वो अनरियलाइज्ड है. थर्ड, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है स्टेक होल्डर्स का. नाउ अगर कोई भी अनसोल्ड एसेट है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट के स्टेक होल्डर्स को उसको वो बताना पड़ेगा. फिफ्थ इज कोई भी नया लीगल लिटिगेशन, लीगल केस लिटिगेशन अगर कंपनी ने किसी और के ऊपर किया है या फिर किसी और ने कंपनी के ऊपर किया है तो उसको वो बताना पड़ेगा. एंड उसको रीजंस देने पड़ेंगे कि वो प्रोसेस विद इन टाइम लिमिट क्यों कंप्लीट नहीं हुआ एंड कितना एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट द प्रोसेस. नाउ द स्टेटस रिपोर्ट शैल इंक्लोज द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द लिक्विडेशन showing the receipts and the payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date. जो स्टेटस रिपोर्ट है उसके अंदर ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे लिक्विडेशन के जिसमें जो भी रिसीव हुआ है जो रियलाइज हुआ है आपको असेट से और जो भी पेमेंट्स किया अपन ने टू द लायबिलिटीज उनका एक स्टेटमेंट होगा. Now the liquidator shall file the status report with the board within 7 days of the meeting of the contributory. जो status report है liquidator को तो मीटिंग हुई थी contributories के साथ हुई थी टाइम लिमिट के 15 डेज बाद उसके 7 डेज के विद इन उसको स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है बोर्ड को. बोर्ड यहाँ पे IBPI है. Now status report in terms of regulation 37 तो बेसिकली ये एक सैंपल है उसका जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेंशन करोगे नेम ऑफ द कंपनी, देन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन, देन द डेट व्हिच दिस स्टेटमेंट इज ब्रॉट डाउन. Next is final report. On completion of the liquidation process, the liquidator shall prepare the final report giving details as specified in regulation 38 clause 1. First, audited accounts of the liquidation showing receipts and payments pertaining to liquidation since the liquidation commencement date, and a statement demonstrating that the assets of the corporate person has been disposed of, the debt of the corporate person has been discharged to the satisfaction of the creditors, and no litigation is pending against the corporate person or sufficient provision has been made to meet the obligations arising from the pending litigation. उसको एक फाइनल रिपोर्ट इशू करनी होती है बोर्ड को जिसके अंदर वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द लिक्विडेशन जिसके अंदर रिसीट्स और पेमेंट्स है ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस उसको देगा. देन वो एक स्टेटमेंट देगा कि जो भी एसेट्स है कॉर्पोरेट पर्सन के वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, जो भी लायबिलिटीज है उसको सेटिस्फाई कर दिया है. इन केस कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो उसके लिए हमने सफिशिएंट प्रोविजन बना लिया. नेक्स्ट इज एक सेल्स स्टेटमेंट देनी पड़ेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द एसेट्स कंटेनिंग realized value, the cost of realization of any, the manner and mode of sale, an explanation for the shortfall if the value realized is less than the value assigned by the registered valuer in the report of the valuation of assets. Next, the person to whom the sale is made and any other relevant details of the sale. एक सेल स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सारी एसेट्स की जिसके अंदर बताओगे कितनी वैल्यू रियलाइज हुई है एसेट से, इन केस एनी कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन लगी है तो मैनर और मोड क्या है सेल का, एंड अगर जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने उसकी वैल्यूएशन की थी उसके लेस देन उसकी अमाउंट कम बिकी है उससे तो बताओगे एक्सप्लेनेशन कि व्हाई वो शॉर्टफॉल क्यों है, रीजन क्या है उसका शॉर्टफॉल का. देन द पर्सन टू हूम द सेल इज मेड किसको आपने सेल की है एंड कोई भी अदर एलिमेंट डिटेल्स है तो अपना सेल सर्टिफिकेट. नाउ द लिक्विडेटर शैल सेंड द फाइनल रिपोर्ट फॉरथवेयर टू द रजिस्ट्रार एंड द बोर्ड. द लिक्विडेटर शैल सबमिट द फाइनल रिपोर्ट एंड compliance certificate in form H along with the application to the adjudicating authority. जो लिक्विडेटर होगा वो फाइनल रिपोर्ट भेजेगा बोर्ड को और रजिस्ट्रार को. जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसके साथ एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट जाता है फॉर्म H के अंदर. ये उसका एक ड्राफ्ट है, ऐसा होता है.
जब आप एप्लीकेशन करते हो एडजुडिकेटेड अथॉरिटी को विच इज एनसीएलटी इन केस ऑफ कंपनीज, तो उसके साथ फाइनल रिपोर्ट के साथ कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी जाता है. Now next is corporate voluntary liquidation account. Regulation 39 of IBBI Voluntary Liquidation Process Regulations 2017 amended up to 31st January 2024 provides that first the board shall operate and maintain an account to be called the corporate voluntary liquidation account in the public accounts of India, provided that until the corporate voluntary liquidation account is operated as a part of the public accounts of India, the board shall open a separate bank account with the scheduled bank for the purposes of this regulation. Now, board को एक अलग से separate account खोलना पड़ता है, which is corporate voluntary liquidation account. In public accounts of India basically एक बैंक अकाउंट है जो गवर्नमेंट जिसके अंदर एज अ बैंकर एक्ट करती है. उसके अंदर वो मनी होती है जो भी अनआइडेंटिफाइड ओनर्स होते हैं मनी के, वो सारा पैसा उस अकाउंट में होता है, which is public account of India. तो उसमें ये पैसा जाएगा. बट जब तक वो वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट नहीं खुलेगा तब तक बोर्ड को एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक के अंदर सारी रिसीट्स डालनी होगी. नाउ a liquidator shall deposit the amount of unclaimed dividends, if any, and the undistributed proceeds, if any, in the liquidation process, along with the income earned thereon till the date of deposit into the corporate voluntary liquidation account before he submits an application under subsection 7 of section 59. जो लिक्विडेटर होगा, जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड है या फिर जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स है, उसको इस अकाउंट में डालेगा. ठीक है. और सपोज उसने डिले कर दी थोड़ा डालने में, तो वहां तक का जो भी इंटरेस्ट उस पे बना उन रिसीट्स पे, वो भी उसके साथ उसके अंदर डाला जाएगा कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में बिफोर वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा अंडर सेक्शन 59 सबसेक्शन 7, जिसके अंदर वो एप्लीकेशन लगाता है बोर्ड को कि resolution का प्रोसेस ओवर हो चुका है. Now, a liquidator who holds any amount of unclaimed dividends or undistributed proceeds in the liquidation process on the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India Voluntary Liquidation Process Amendment Regulations 2020 shall deposit the same within 15 days of the date of such commencement, along with any income earned thereon till the date of deposit. तो अगर इसके कमेंसमेंट से पहले कोई भी डिसोल्यूशन प्रोसेस हुआ है, उसका जो भी रिसीट्स है, रिसीट्स इन इस सेंस में अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स, वो उसको 15 डेज के विदिन फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ आईबीबीआई उसको उस अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट व्हिच हैज बीन अर्न्ड टिल डेट. नाउ फोर्थ इज a liquidator who fails to deposit any amount into the corporate voluntary liquidation account under this regulation shall deposit the same along with interest thereon at the rate of 12% per annum from the due date of deposit till the date of deposit. In case liquidator fail हो जाता है सबमिट करने में उस अकाउंट के अंदर अमाउंट, उसको 12% की रेट से इंटरेस्ट के साथ वो सबमिट करना पड़ेगा. Next is a liquidator shall submit to the authority under which the corporate person is registered and the board the evidence of deposit of the amount into the corporate voluntary liquidation account under this regulation and a statement in Form G setting forth the nature of the amount deposited into the corporate voluntary liquidation account and the names and the last known addresses of the stakeholders entitled to receive the unclaimed dividend or undistributed proceeds. जो liquidator है उसको evidence देना पड़ेगा बोर्ड को और जिसके अंडर वो रजिस्टर्ड है. कंपनी एक्ट की बात करें तो रजिस्ट्रार को, एलएलपी की बात करें तो उसका अलग से जो एसेट्स के ऊपर. ठीक है. तो उसको ये एविडेंस देना पड़ेगा कि उसने अमाउंट सबमिट करा दी है कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट में, और एक स्टेटमेंट जाता है फॉर्म जी के अंदर जहाँ पे वो नेचर बताएगा कि क्या नेचर की वो अमाउंट है. सपोज अगर इंटरेस्ट है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा इतना अमाउंट इंटरेस्ट का है, एंड उसके साथ वो एक नेम जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसीड्स है उसके कौन ओनर्स है, उनके लास्ट नेम एड्रेसेस क्या है वो उसको देनी पड़ेगी. नाउ फॉर्म जी ऐसा है, एक ड्राफ्ट है फॉर्म जी का. Next is the liquidator shall be entitled to a receipt from the board for any amount deposited into the corporate voluntary liquidation account under this regulation. जब भी कोई अमाउंट डिपॉजिट होगी into corporate voluntary liquidation account, उसको एक रिसीट मिलेगी आईबीबीआई के तरफ से. Next is prior to dissolution of the corporate person, a stakeholder who claims to be entitled to any amount deposited into the corporate voluntary liquidation account may apply to the liquidator in Form 1 for the withdrawal of the amount. In case dissolution से पहले एक stakeholder
क्लेम कर रहा है कि मेरी कोई अमाउंट है जो कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन के अकाउंट के अंदर है, तो वो अप्लाई करेगा लिक्विडेटर को फॉर्म आई के अंदर ताकि वो विड्रॉ कर सके वो अमाउंट. Now, on receipt of the request from the stakeholder, the liquidator shall, after verification of the claim, shall request the board for release of the amount to him on onward distribution. जब liquidator के पास वो request आएगी, तो वो verify करेगा whether the claim is true or not, and वो request करेगा board से कि वो release करे amount from corporate voluntary liquidation account. Now, the board on receipt of request under sub-regulation 7A may release the amount to the liquidator. जब board के पास वो request आएगी, तो after verifying all the things, वो release कर देगा amount liquidator को. Now, the liquidator shall, after making the distribution to the stakeholder, shall intimate the adjudicating authority of such distribution. Liquidator जब वो amount आएगी उसके पास और वो satisfy कर देगा जो भी stakeholder है उसको inform करना पड़ेगा adjudicating authority को, which is NCLT, कि उसने distribute कर दिया है. Now, after dissolution of the corporate person, a stakeholder who claims to be entitled to any amount deposited into the corporate voluntary liquidation account may apply to the board in Form I for an order for withdrawal of the amount. If after dissolution कोई claim करता है stakeholder कि उसका जो amount है वो है voluntary corporate voluntary liquidation account में, तो उसको वही procedure follow करना पड़ेगा, उसको apply करना पड़ेगा board को Form I में ताकि वो withdraw कर सके अपने amount. If any other person other than the stakeholders claim to be entitled to any amount deposited into the corporate voluntary liquidation account, he shall submit evidence to satisfy the liquidator or the board as the case may be that he is so entitled. अगर कोई भी other than stakeholder कोई भी इंसान कोई भी person बोलता है कि he is entitled to the amount which is invested, which is there in corporate voluntary liquidation account, उसको भी form उसको पहले सबमिट करनी पड़ेगा एविडेंस ताकि वो लिक्विडेटर को या फिर बोर्ड को satisfy कर सके that amount actually belongs to him. Next is the board may, if satisfied that a stakeholder or any other person referred to under sub-regulation 7D is entitled to withdrawal of any amount from the corporate voluntary liquidation account, make an order for the same in favor of that stakeholder or that other person. अगर बोर्ड satisfy हो जाता है कि वो अमाउंट स्टेक होल्डर का है या फिर जो भी अदर देन स्टेक होल्डर पर्सन है उसका है, तो वो अलाउ कर देगा विड्रॉल करने के लिए वो अमाउंट इन फेवर ऑफ दैट स्टेक होल्डर और दैट अदर पर्सन. नाउ 9 point, the board shall maintain a corporate person ledger wise ledger of the amount deposited into and the amount withdrawn from the corporate voluntary liquidation account under this regulation. जो बोर्ड है उसको कंपनी वाइज एक लेजर बनानी है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है और कितना अमाउंट विथड्रॉ हुआ है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट. The board shall nominate an officer of the level of executive director of the board as a custodian of the corporate voluntary liquidation account, and no proceeds shall be withdrawn from the account without his approval. अब बोर्ड अगर चाहे तो नॉमिनेट कर सकते हैं ऑफिसर को which is of the level of executive director, and वो एक एक्ट करेगा एज कस्टोडियन एज अ सेफगार्ड ऑफ दैट अकाउंट, एंड उसके विदाउट अप्रूवल उसके कोई भी विड्रॉ नहीं कर सकता उस अकाउंट में से अमाउंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द बोर्ड शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ द वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट एंड गेट्स द सेम ऑडिटेड एनुअली. बोर्ड को एक प्रॉपर अकाउंट्स बनाना है वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट का, कितने रिसीट हुई कितने पेमेंट हुए और उसकी ऑडिटेड होगी, उसको एनुअली आप ऑडिट कराओ. Next is the audit report along with the statement of accounts of the corporate voluntary liquidation account referred to in sub-regulation 11 shall be placed before the governing board and shall be forwarded to the central government. जब audit report तैयार हो जाएगी उस अकाउंट की तो पहले वो बोर्ड के पास जाएगी and then it shall be forwarded to the central government. 13 point, any amount deposited into the corporate voluntary liquidation account in pursuance of this regulation which remains unclaimed or undistributed for a period of 15 years from the date of order of dissolution of the corporate person, and any amount of income or interest received or earned in the corporate voluntary liquidation account shall be transferred to the consolidated fund of India. अगर कोई भी amount deposited है voluntary corporate voluntary liquidation account में for more than a period of 15 years, तो वो actually में transfer हो जाएगी दूसरे fund में which is consolidated fund of India. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बेसिकली एक फंड है गवर्नमेंट का जिसके अंदर सारी डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो भी इनकम होती है वो उस फंड
आफ्टर 15 years जो भी कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अमाउंट का इनकम मतलब जो भी मनी है उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। नाइस जो है पर्टिकुलर्स ऑफ कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट। Now IBPI has specified a separate bank account for deposit of unclaimed dividends or undistributed proceeds of the liquidation process. The particulars of this account are as under. ये एक एग्जांपल है, नेम ऑफ द अकाउंट मेंशन हो जाएगा, अकाउंट नंबर मेंशन हो जाएगा, नेचर ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड, नेम ऑफ ब्रांच. Now the liquidators are advised to deposit the amount of unclaimed dividends or undistributed proceeds of voluntary liquidation processes into the aforesaid amount. इस अकाउंट में पहले उनको डिपॉजिट कराना पड़ेगा. Now next है preservation of records. So as per regulation 41 of IBBI, Voluntary Liquidation Process Regulations 2017, the liquidator shall preserve copies of all such records which are required to give a complete account of the voluntary liquidation process. Without prejudice to the generality of the obligations under sub-regulation 1, the liquidator shall preserve copies of records relating to or forming the basis of his appointment as liquidator, including the terms of appointment, handing over or taking over the assignment. Okay, let me explain this first. तो लिक्विडेटर वो सारी रिकॉर्ड्स जो है प्रिजर्व करके रखेगा जो भी लिक्विडेशन प्रोसेस में यूज हुई है या फिर उसको जो भी रिकॉर्ड्स मिले हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन. नाउ वो प्रिजर्व करेगा रिकॉर्ड्स व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग. उसका अपॉइंटमेंट कैसा हुआ एज अ लिक्विडेटर, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट. नाउ इन केस लिक्विडेटर चेंज होता है तो जब वो हैंड ओवर करेगा दूसरे लिक्विडेटर को जो भी असाइनमेंट है जो भी रिकॉर्ड्स है तो वो या फिर दूसरे लिक्विडेटर जब टेक ओवर करेगा तो वो सारा प्रोसेस जो है उनके जो भी रिकॉर्ड्स है वो. नाउ इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, पब्लिक अनाउंसमेंट, claims, verification of claims and list of stakeholders, engagement of professionals, registered valuers, etc., including work done, reports, etc., submitted by them. All filings with the adjudicating authority, affiliate authority, High Court, Supreme Court, whichever applicable, and their orders. Statutory filing with the board and insolvency professional agencies, correspondence during the voluntary liquidation process, cost of voluntary liquidation process, all reports, registers, documents such as preliminary report, annual status report, final report prior to dissolution, various registers and books, etc., and any other records which are required to complete account of the process. जो ऊपर के points है पब्लिक अनाउंसमेंट वो माधव ने एक्सप्लेन किया था, उसकी जो भी रिकॉर्ड्स है वो आपको रखने हैं. क्लेम्स, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स और जो भी लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स आप प्रिपेयर करते हो उन सब के रिकॉर्ड्स रखने हैं. एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग वर्क डन, रिपोर्ट्स, एक्सेट्रा. जो भी आपने जब एंगेज किया प्रोफेशनल को रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के साथ आपने जब एसेट्स को वैल्यू कराया तो उन सबके जो रिकॉर्ड्स है वो सब रखने हैं. एंड सो ऑन. The liquidator shall preserve electronic copy of all records, physical and electronic, for a minimum period of 8 years, and a physical copy of all records for a minimum period of 3 years. From the date of dissolution of the corporate person, before the board, the adjudicating authority, appellate authority, or any court, whichever is later. जो liquidator है उसको electronic copy रखनी है records की, whether records are in physical form or electronic form. उनकी electronic copy रखनी है for a minimum period of 8 years and physical copy रखनी है for a minimum period of 3 years. In case of replacement of liquidator during the process, the outgoing liquidator shall hand over the records under sub-regulation 1 and 2 to the new liquidator. In case replace हुआ liquidator तो उसको जो भी records है उसको hand over करने to the new liquidator. The liquidator shall preserve the records at a secure place and shall be obliged to produce records as may be required under the code and the principal regulations. तो liquidator को preserve करने record एक secure place में and जब भी वो obliged होता है उसको board को या फिर appellate authority को उसको वो देने हैं. The liquidator shall, along with the application filed under subsection 7 of Section 59 to the adjudicating authority, provide the details and the manner of producing records. तो उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है adjudicating authority को, which is NCLT, ताकि वो बताएगा कि उसने किस मैनर में प्रिजर्व की है रिकॉर्ड्स. Now explanation: the records referred to in this regulation includes the records pertaining to the period of the
liquidation process during which the liquidator acted as such, irrespective of the fact that he did not take up the assignment from its commencement or continue the assignment till its conclusion. इसमें बोला है जो रिकॉर्ड्स होंगे वो पूरे लिक्विडेशन प्रोसेस के होंगे. डजंट मैटर कि उसमें बीच में रिप्लेस हो गया लिक्विडेटर या फिर आप सेकंड लिक्विडेटर या फर्स्ट लिक्विडेटर, आपको पूरे लिक्विडेशन रिकॉर्ड पूरे लिक्विडेशन प्रोसेस के रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करने हैं. Next is a statement that company is in liquidation. As per section 238 of the code, where a company is being wound up, whether by the tribunal or voluntarily, every invoice, order for goods or business letter issued by on behalf of the company or the company liquidator of the company or a receiver or manager of the property of the company, being a document on or in which the name of the company appears, shall contain a statement that the company is being wound up. Irrespective of the fact that company is being wound up by the tribunal or voluntarily, जो भी invoice होगा order of goods होंगे, जो भी issue करेगा company या फिर on behalf of the company any other person, उसके अंदर एक statement जाएगा that company is being wound up. Now, if a company contravenes the provision, 5 slides. If a company contravenes the provision of subsection 1, the company and every officer of the company liquidator, and any receiver or manager who willfully authorizes or permits the non-compliance shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 3 lakh. In case contravene होता है the above provision, तो जो कंपनी है उसका कोई भी ऑफिसर है, कंपनी लिक्विडेटर है, एंड एनी अदर पर्सन जिसने ऑथराइज किया परमिट किया नॉन कंप्लायंस को, वो पनिशेबल होगा विद अ फाइन ऑफ ₹50,000 which may extend to ₹3 lakhs. Now, books and papers of the company acts as an evidence. Where a company is being wound up, all books and papers of the company and of the company liquidator shall, as between the contributors of the company, be prima facie evidence of the truth of all the matters purporting to be recorded there. As per section 2, subsection 12 of the Companies Act 2013, book and paper and book or paper include books of accounts, deeds, vouchers, writings, documents, minutes, and registers maintained on paper or in electronic form. As per section 2, subsection 13 of the Companies Act 2013, books of account include records maintained in respect of all the sums of money received and expended by the company and matters in relation to which the receipts and expenditure take place. Second, all sales and purchases of goods and services by the company. Third, the assets and liabilities of the company and the items of cost. जहाँ पे कंपनी वाउंड अप हो रही है, जो सारी बुक्स एंड पेपर्स है कंपनी के या फिर कंपनी लिक्विडेटर के, बेसिकली दे एक्ट एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस. जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस एक्ट करते हैं कि ये मैटर हुआ था. Now, books and paper has been defined as per section 2, subsection 12 of Companies Act. इसके अंदर deeds, vouchers, writings, documents, minutes ये सब include होते हैं. And as per section 2, subsection 13, books of accounts के अंदर include होते हैं जो भी money receive हुई है कंपनी को, जो भी expenditure कंपनी ने किया है, sales, purchase, assets, liabilities, and items of cost. Now, powers of tribunal to declare dissolution of company void. As per section 356 of the Companies Act 2013, whether a company has been dissolved, whether in pursuance of this chapter 20 or of section 232 dealing with merger and amalgamation of company or in any other case, the tribunal may at the time within 2 years of the date of dissolution on application by the company liquidator of the company or by any other person who appears to the tribunal to be interested, make an order upon such terms as the tribunal thinks fit, declaring the dissolution to be void, and thereupon such proceedings may be taken as if the company has not been dissolved. अगर company dissolved हुई है under this chapter या फिर due to merger or amalgamation of companies in any other case, the tribunal within 2 years judgment pass कर सकता है. अगर किसी company liquidator या किसी person ने tribunal के सामने application लगाई तो within 2 years वो date of dissolution के within 2 years the tribunal ने वो order कर सकता है that the liquidation of company void है and जो company है वो normal proceedings अपनी start रखेगी. The tribunal shall forward a copy of the order within 30 days from the date thereof to the registrar who shall order the same and direct the company liquidator or the person
such as the insolvency professional appointed as liquidator and the court, on whose application the order was made, to file a certified copy of the order within 30 days from the date thereof, or such further period as allowed by the tribunal, with the registrar who shall record the same. जो ट्रिब्यूनल है वो ऑर्डर की कॉपी है 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगी एंड दे आस्क द सेम टू द कंपनी लिक्विडेटर, वो भी एक सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की रजिस्ट्रार को देगा विदिन 30 डेज. Now, voluntary winding up of the company, etc., not to stop investigation proceedings. As per Section 226 of the Companies Act 2013, provides that an investigation under Chapter 14 may be initiated, notwithstanding, and no such investigation shall be stopped or suspended by reason only of the fact that first application has been made under Section 241, the company has passed a special resolution for voluntary winding up or any other proceeding for the winding of the company is pending before the tribunal. Now, जो chapter 14 है उसके अंदर basically investigation process लिखा हुआ है. Just because application आपने section 241 में दे दी है tribunal को, section 241 basically जब कोई भी person NCLT को application लगाता है for relief due to mismanagement in company, या तो वो हो चुका है या फिर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, या फिर इन केस उसने ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन लगाई है बट इट इज पेंडिंग फ्रॉम साइड ऑफ ट्रिब्यूनल. इन तीन केसेस में आप ऐसे नहीं बोल सकते जस्ट बिकॉज वो इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन है तो वो इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट द कंपनी वो स्टॉप हो जाएगी. Provided that where a winding up order is passed by the tribunal in the proceedings referred to in clause 3, the inspector shall inform the tribunal about the pendency of the investigation proceedings before him, and the tribunal shall pass such order as it may deem fit. In case जो pendency है tribunal की साइड पे है तो जो अपने इंस्पेक्टर है वो ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन लगाएगा जिसमें बोलेगा कि देयर इज पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स, और फिर जो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा उस हिसाब से आगे होगा. Provided further that nothing in the winding up order shall absolve any director or any employee of the company from participating in the proceeding before the inspector or any liability as a result of finding by the inspector. In case company dissolve हो गई या company is in the process of dissolution, that doesn't mean जो director है company का जो employee है वो liable नहीं है. जो भी proceedings चल रही है against the company उसमें participate करने के लिए या उसका जो भी result आएगा उसके against वो liable नहीं है. They all will be liable. Thank you. That's all.